Assalamu alaikum, warm afternoon, and we're back with match number 11. Toss falling into the kitty of Global Dadoo Titans, and they asked United Imports to bat first, invited and inserted into bat Sahil, and he's got Zishan Ali. These are the two openers, and it's action time in the middle. It's game time in the middle. Action will continue for the next couple of days here at Bakshi Stadium. It's going to be an exciting competition ahead in days to come. In the meantime, Samir Bell is getting ready for Global Dadoo Titans to operate. To open the attack, Sahil will face the likes of Samir Bell. Global Dadoo Titans, they lost their game one. They need to bounce back. Are they in to bounce back here? Block, not for runs. It's a dot ball. It's straight away right on money. Samir Bell against the likes of Sahil Shafi, who scored the first 100, the first one to score century in the tournament, the first centurion. The next one, he keeps it away to mid on. There is no possibility of a run as the two batters are yet to open their account. We'll have to wait and watch how these two batters will operate and how they will adjust to the conditions here. This is a good track to bat on. There is a good bounce on offer. The next one is gone fine down to the backward of scare. Fielder comes around to stop the ball and limits the scoring down to 2, and with that brace is off the mark. So is United Imports. They're underway with brace 2 for none. He grazed that brace as they are 2 for none. We are in over number 1. This is JK Sports Time Facebook and JK Sports Time YouTube, along with Red FM JK, bringing you the ball by ball commentary. Little uppish and aerial there. Samir unable to hold on. Samir unable to control that one. Would have been a good chance. It would have delighted the whole side. They need something positive, something strong right in over number 1. At this very crucial juncture, they need to keep things tight. We'll have to wait and watch. It's 3 for none. And in the meantime, we'll have to wait and watch how Samir continues to operate as he's getting ready to bowl the next one. There is going to be that fly slip and the man at backward a point. There is a gully backward a point and a man at straightish point area. Good field set for Samir Bell. We're done with the over number 1 here. Tight over this from Samir Bell. We're done with the first one here this afternoon. We have 3 games today. One already done where Atwas India 11-handed Sultan Warriors 7 wicket defeat, and coming back to this one, which is the second game for today, and it will be interesting to see and find out how this game will pan out and how things will unfold in today's match. Only the time will tell us, as it's a must win for Global Dadoo Titans. They gone down to Hillview Rajouri in other game when they set 191 against Hillview, and Hillview batted with a great sight and view. They gone on to chase 191 with few overs to spare. In today's match, Global Dadoo will try to be back and will try to bounce back. Imtiaz lefty. He's got the ball in his hand. What he's going to do, there are going to be a couple of milestones on the line for some of the guys. Sir Shilabas, you need 1 stumping to complete 100 stumpings behind sticks, behind stumps. 1 to complete that milestone. Has achieved a rare feat. It's 3 for none after the completion of over number 1 from Southern Pavilion, and it's going to be Imtiaz lefty to operate. No slip in place. Man at backward a point, straightish point, cover point, extra cover. Heavily coordinated this portion from behind scare on the off, in front of scare on the off. But this is an area from extra cover to mid-off. There is a big space.
down the leg side. Gonna be runs. Looks like gonna be 4. And it is indeed a boundary to start the fresh over. Just help us that one on its way. Ravi Kumar Chaurasia signalling a boundary. That was down the leg. Easy pickings for Sahil Shafi. The first one to score 100 in the tournament. And the quickest to 50. Scored 19 ball 50 and now is back with another good shot here in today's game. And that was asking to be hit. Look how good he's looking at the moment. He's middling the ball right now. Once again worked away nicely. Imtiaz lefty is trying to use that lower bounce and the surface to perfection. But Sahil is very much there. He's equally to the task. Zishan, the left-hander, the attacking batter. He's loving pace. He's an attacking cricketer. He's going to believe in attack is the best form of defense. And he hardly goes back to use that defensive mood. He's not going to defend too many balls. He would like to open up both the areas, be it the offside, be it the onside. There is going to be slip for Zishan. Amir Aziz in slip cordon. Down the leg side again. We'll have to wait and watch. It's a wide ball. Imtiaz with a new ball. Is trying to keep it simple and tight, but is losing control over the ball and the grip over the ball. He has to show that clasp and the grasp. Yeah, he need that clutch. 10 for none after 1.2. Why did that delivery? And that means 2-3. 7 of 2 balls in this over. Onto the pad line again. Defensive approach. Leg by signaled. Little house that. Or the house that from Imtiaz lefty. And is turned down. Shake up ahead straight away. It's 11 without loss. We are into the second over. This is JK Super Cement. Red Premier League Season 2 presented by Athwas. And Athwas itself stands for togetherness. 11 without loss. Imtiaz again. Trying to slash it. Was there an opportunity? Looks like Sarshil Abbas dropped to that. Can't call it a sitter. It was travelling at a good pace. Would have been absolute blind or a good goal ball behind the stumps. But look at the response. Hands on the head. Ooh, yay. Should have been taken. And that was the response from Amir Aziz. And the man at point. Bright sunshine, 27 degrees Celsius. This afternoon at Bakshi Stadium. Quality shot, but finest man in place. The way he driven that, it looked a good shot. But if finest man can't beat the man there, can't find the gap, he would have loved to go through that gap, that corridor. In the meantime, Imtiaz continues stop rate. There is a man at short third, man at mid on and mid off. This time he goes aerial, but there is protection. Interesting field set for Zishan Ali. He's got a man around that mid-wicket portion. He's got a man. He's got somebody at scale. Like he's got 2 fielders to cover in because Zishan is the strong batter of leg side. He's loving to play it on to the onside. He's strong on onside. That's why he has got that mid-wicket and the scale leg fielder in place to cover up that portion and to dictate that you are not in a free space where you could easily free and break free and free your arms. It's 12 for none after 2 overs. We're going to be in over number 3, Samir Bell to continue. Short pause in play. Captain is trying to think over it. What he's going to do now. धन्यवाद मनवर. दूसरा मुकाबला दिन का पहली पारी ग्लोबल डर्डू टाइटंस की टीम जिन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, आमंत्रित किया यूनाइटेड इंपोर्ट्स को. ज़ीशान अली और साहिल ने शुरुआत की है बल्लेबाजी में. 12 रन बने हैं 2 ओवर में, 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से. समीर बैल 1 ओवर 3 रन. ज़ीशान अली 1-5 गेंदों से और साहिल 8 रन बनाए. और पिछले मुकाबले के
शतकवीर। इस टूर्नामेंट के मात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने शतक पूरा करने का श्रेय प्राप्त किया है यूनाइटेड इंपोर्ट्स के इस खिलाड़ी साहिल शफी ने। जीशान के साथ इस समय प्रारंभ करने आए हैं यूनाइटेड इंपोर्ट्स के लिए। तीसरा ओवर, समीर बेल का ये दूसरा ओवर। 1.1 ओवर 4 रन खर्चे, 13 रन 2.1 ओवर की गेंदबाजी। 11वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास। अगली गेंद समीर बेल की अच्छी गेंद थी, स्ट्रोक अच्छा था पर सीधे फील्डर के पास। और समीर बेल ज़्यादा गति का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विकेट टू विकेट ज़्यादा गेंदबाजी करते हैं, स्टंप्स पे गेंदबाजी करते हैं और निर्णय उनका सही है क्योंकि जानते हैं साहिल शफी। और यहाँ पर हवा में थी, खिलाड़ी के पास प्रयास था दर्दिश का, पर गेंद हाथ में टकराने के बाद, हाथ से टकराने के बाद छिटकी। समीर बेल की बात कर रहे थे कि एक अच्छे गेंदबाज है, ज़्यादा रूम नहीं देते बल्लेबाज को, पर साहिल शफी जो कि पिछले मुकाबले में शतक लगाकर नए आत्मविश्वास के साथ उतरे और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनका। एक बार फिर गेंद के आने का इंतजार किया, लॉन्ग ऑन की ओर उसको खेला और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। वसीम रजा टीम का हिस्सा जरूर है और ऐसे में ग्लोबल डडू टाइटंस की बात करें, 14 2.4 के बाद जीशान अली 2 पे, साहिल शफी 9 पे 10 गेंदों से 105 प्रोजेक्टेड स्कोर पर विकेट सुरक्षित हैं, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में। दूसरे सत्र में विकेट का स्वभाव किस प्रकार का रहेगा ये देखने वाली बात होगी। ऑन साइड में खेल करके जब तक खिलाड़ी आकर के हाँ फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों के पास रन लेने का अवसर था। एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से गेंद को फील्ड किया, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता। 5.29 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाया यहाँ अब तक यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर की टीम ने। दूसरा मुकाबला यूनाइटेड इंपोर्ट्स का। आत्मविश्वास साफ दिखता हुआ सीधे फील्डर के पास। एक बार फिर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, रन संख्या अभी भी 15। 3 ओवर की गेंदबाजी, 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं टीम यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर ने। हालांकि वे आज टॉस हारे थे, आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए ग्लोबल डडू टाइटंस ने। साहिल और जीशान ने शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत, थोड़ी धीमी शुरुआत जरूर है पर जानते हैं विकेट काफी महत्वपूर्ण है। अब विकेट को सुरक्षित रखना पावर प्ले में काफी महत्वपूर्ण है। 15 रन बने हैं 3 ओवर की गेंदबाजी में। दिन के पहले मुकाबले में अथवास इंडिया ने जीत अर्जित की, सुल्तान को हराया और लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा सुल्तान को इस प्रतियोगिता में 2 मैचेस में। वही अथवास ने तीसरे मैच में जीत अर्जित की, कुल मिलाकर 3 मैचेस खेले हैं, 2 में जीत 1 में हार। इम्तियाज लेफ्टी, 1 ओवर 8 रन, नया ओवर और ये अच्छा स्ट्रोक है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ यहां यूनाइटेड इंपोर्ट के इस बल्लेबाज। और जीशान अली एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, एक अनुभवी खिलाड़ी है, खूबसूरत और बेहतरीन स्ट्रोक था। 4 जरूर बटोरे और इस 4 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि। और पैड पे टकराई अपील हल्की सी, पर दौड़ करके रन पूरा कर रहे हैं। लेग बाय का इशारा संभव थे, आएगा अंपायर का देखना होगा। जी हाँ, अब जाकर के लेग बाय का निर्णय आता हुआ। रन संख्या में अब वृद्धि, 19 से बढ़कर ये रन संख्या 20 पर पहुंची। 3.2 ओवर की गेंदबाजी, साहिल 9 पे और जीशान अली बाएं हाथ के बल्लेबाज 7 पे। यूनाइटेड इंपोर्ट्स की टीम एक अच्छी शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत की तलाश में। पर इम्तियाज लेफ्टी भी एक अच्छे अनुभवी गेंदबाज है, एक दिग्गज ऑलराउंडर है। जहां तक ग्लोबल डडू टाइटंस का सवाल, इस प्रतियोगिता में उन्हें खेलने का अवसर मिला है जीडी टाइटंस के साथ। समीर बेल, इम्तियाज लेफ्टी, दर्दिश गोनी। 20 सामने की और नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे स्टंप्स पे गेंद जा टकराई है, पर खिलाड़ी सुरक्षित वहां पे। और ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। रवि कुमार और उनके साथ दूसरे अंपायर जो इस मुकाबले में अपना दायित्व, सौरव विज जो दूसरे अंपायर है, बलविंद्र कुमार आज के इस मुकाबले में अपना नेतृत्व प्रदान नहीं कर रहे हैं। 20 3.3 के बाद इम्तियाज लेफ्टी 1.3 ओवर 12 रन,
पहले विकेट की तलाश इम्तियाज लेफ्टी को, वहीं पे समीर बेल ने भी 2 ओवर की गेंदबाजी की और उन्हें भी तलाश है पहले विकेट की। अभी तक जीडी टाइटंस, ग्लोबल डडू टाइटंस को विकेट नहीं मिला है। वो चाह रहे होंगे, तलाश रहे होंगे कि एक विकेट जरूर तलाशे हैं पावर प्ले में, वो विकेट मिले जरूर। लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है पिछले मुकाबले में। साहिल ने वो शतक लगाया था, वो बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी यूनाइटेड इंपोर्ट्स की। अगर हम बात करें 20 बगैर नुकसान के साहिल सामने संयम, आत्मविश्वास और ठीक तरीके से गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करें। अंतिम समय तक गेंद को देखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी गेंदबाज को। इस विकेट पे बाएं हाथ के जो गेंदबाज हैं, खासकर ऑफ स्पिन गेंदबाज, काफी घातक साबित हुए हैं। इम्तियाज लेफ्टी जो कि थोड़ा तेज फेंकते हैं। 3.5-20 मात्र ऐसे खिलाड़ी साहिल शफी इस टूर्नामेंट के जिन्होंने शतक पूरा किया हो। 106 रन बनाए थे, नाबाद रहे थे। जेके सुपर सुपर रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन के मात्र वाहिद खिलाड़ी यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर के साहिल शफी, जिनके नाम शतक है। और देखना होगा इस शतक तालिका में क्या इस क्लब को और कोई ज्वाइन करता है अथवा नहीं। फिलहाल ओवर समय 4 पूरे 20 बगैर नुकसान के यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर, साहिल 9, जीशान अली 7। 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से 100 प्रोजेक्टेड स्कोर, जो वर्तमान रन गति है। पर यूनाइटेड इंपोर्ट्स के पास वो क्षमता है। साहिल, मुजम्मिल फेरोज, अफान वानी, जीशान अली, खालिद भट्ट, फैजान अंत में अच्छी बल्लेबाजी कर ले। उसके अलावा भी आपके पास बल्लेबाजी में विकल्प हैं। और सचिन कुमार भी अच्छी बल्लेबाजी अंत में कर लेते हैं। तो बहुत सारे विकल्प हैं बल्लेबाजी में, डेप्थ है। और आज जैसा कि हम हमेशा जिक्र करते हैं कि नंबर 9, नंबर 10 तक बल्लेबाजी आपके पास होती है। वो 3 डायमेंशनल फार्मूला, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग आप लेकर के आते हैं ऐसे क्रिकेटर्स को, उनका चयन किया जाता है। तो कोशिश जरूर यहाँ पर भी समीर बेल एक बार फिर नया ओवर लेकर के तैयार। अभी तक परिवर्तन नहीं किया गया और शायद कप्तान के जहन में ये जरूर होगा कि समीर बेल ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। 2 ओवर में 6 रन मात्र दिए हैं, अनुशासन दिखाया जरूर है। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी ने आकर के वसीम रजा संभलते जब तक गेंद को फील्ड करते समय दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने का। एक और खाते में जोड़ता हुआ 20 से बढ़कर 21, 4.1 ओवर की गेंदबाजी। जीशान अली 7, साहिल 8। साहिल 9 पे है, जीशान अली 8 पे हैं। 10 गेंदों से 21 रन बने हैं। 5वें ओवर की गेंदबाजी, अच्छी धूप, ये पहली पारी। बेल, यहां बेल के बाद लेग स्टंप पर खराब गेंद, सही नसीहत, सीमा रेखा से बाहर। ये बड़ा स्ट्रोक और 4 रन मिलते हुए यहां पर साहिल को। इस चौका के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या पहुंच गई है 25 पे। बेल के विरुद्ध लेग स्टंप की शेद में थी, एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक बार फिर सामने की ओर, पर इस बार खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे तैनात है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन के अंदर। उन्हें गेंद को रोक दिया, पलटकर दूसरे रन के लिए पर आना की स्थिति, वापस लौटना पड़ा। और इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा यूनाइटेड इंपोर्ट्स के बल्लेबाजों को। एक ठोस शुरुआत चाहिए, आवश्यकता भी है। जीडी टाइटंस अपना पहला मुकाबला हारे हैं, उनका दूसरा मुकाबला है, शुरुआत जीत से करनी है। तो आज यूनाइटेड इंपोर्ट को मात देनी होगी। ये एक और बड़ा है स्टैंड्स में और 6 भी। एक और छक्का, 26 से बढ़कर रन संख्या 32 है। देखिए पिछले मुकाबले में जीशान अली कोई खास योगदान नहीं दे पाए थे पिछले मुकाबले में, पर इस मुकाबले में जानते हैं उनका दायित्व काफी महत्वपूर्ण है, योगदान उनका बेहतर रहने वाला है, महत्वता है इस मुकाबले की। और पहला मुकाबला यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने जीता, ये उनका दूसरा मुकाबला है। वहीं पे जीडी टाइटंस का भी दूसरा मुकाबला, पर पिछले मुकाबले में वे हारे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अवश्य जीत अर्जित करनी जरूरी है जीडी टाइटंस के लिए। हालांकि जितना जरूरी जीडी टाइटंस को, उससे कहीं ज्यादा जरूरी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए यूनाइटेड इंपोर्ट्स को। और जितने आप शुरुआत में लगातार 2 मुकाबले जीतते हैं तो फिर अगला सफर थोड़ा आसान हो जाता है। वो कोशिश जरूर होगी यहाँ यूनाइटेड इंपोर्ट्स की कि वो सुरक्षित हो जाएं 2 मुकाबले जीत करके। पर जीडी टाइटंस चाहेगी कि मुकाबला जीत करके आशाएं बनी रही, क्योंकि अगले 2 मुकाबले काफी महत्वपूर्ण आने वाले हैं।
आसान चुनौती रहने वाली नहीं है। लीजिए एक और बड़ा, एक बार फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर। कमाल की बल्लेबाजी जीशान अली और साहिल द्वारा, और अब जाकर के आक्रमण थोड़ा सेट हुए और आक्रमण कर रहे हैं, विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जानते भी हैं कि रिस्ट्रिक्शन है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन है, तो उसका लाभ लेना जरूरी है। जीशान ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर ये गेंद थी, ठीक तरीके से गेंद की लाइन में है और खूबसूरती के साथ ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर। और इस प्रकार से ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर अभी तक समाप्त हुए हैं और 5 ओवर की गेंदबाजी में बेहतर बल्लेबाजी हुई है। अच्छी शुरुआत दी है जीशान अली और साहिल शफी ने। जीशान 20 पे, साहिल 14, 5 के बाद 38। इम्तियाज लेफ्टी 2 ओवर 12 रन और 3 में 26 दिए हैं समीर बेल ने। और ये पिछला ओवर समीर बेल का थोड़ा खर्चीला साबित जरूर हुआ कि लगातार उनके बाद प्रहार किए जीशान अली ने। वो जीशान एक विस्फोटक बल्लेबाज, एक अनुभवी खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी। अफान वानी, खालिद बाट, मुजम्मिल फैरोज आने वाले बल्लेबाजों में। 38, 5 के बाद साहिल के लिए गेंद खेला जरूर था, पर पीछे खिलाड़ी जब तक पॉइंट से गेंद को फील्ड किया जाता, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। और साहिल शांत स्वभाव के खिलाड़ी, क्योंकि जानते हैं यह हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है। मात्र 5 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 15 ओवर का आना बाकी है। तो एक बार एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए, एक बेहतर प्लेटफॉर्म सेट कर दें, तो फिर वो बड़े प्रहार कर सकते हैं आसानी के साथ, और मध्य क्रम पर भी दबाव नहीं होगा। एक बार फिर आत्मविश्वास के साथ सुरक्षात्मक रूप से खेला जरूर, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 38, 5.2 के बाद पहले विकेट की तलाश जीडी टाइटंस को। दरदिश गोनी, इम्तियाज लेफ्टी, समीर बेल, वसीम रजा और उसके अलावा अथर्वा काले टीम का हिस्सा है। और यहाँ पे थ्रो मिड ऑफ क्षेत्र से, पर दिशाहीन बैकअप पे खिलाड़ी, उनसे भी फंबल हुआ आमिर अजीज। रन जरूर मिले यहाँ पर टीम को। 2 रन और 5.3 के बाद 40। साहिल 16 पे 20, जीशान अली। अच्छी शुरुआत, 1 को 2 में कन्वर्ट किया जाता है और कोशिश कर रहे हैं 1 को 2 में कन्वर्ट करने की, सफलता मिल रही है। कन्वर्जन रेट बहुत बढ़िया रहता है और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप सिंगल डबल से एक कैलकुलेटेड पारी आप खेल रहे हैं। आप 17/17 सेशन पर सेशन चल रहे हैं, तो ये बेहतर होगा आपके लिए और आपकी टीम के लिए। साहिल सामने, इम्तियाज लेफ्टी के, सम्मान दिया वापस बॉलर की दिशा में। हल्की सी मुस्कान, इस बार गति में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर किया था, फॉलो किया था बल्लेबाज को जो शफल कर रहे थे थोड़ा लेग साइड की ओर, जगह बना करके स्ट्रोक खेलना चाहते थे। और इम्तियाज लेफ्टी भी चालाक चातुर गेंदबाज। अभी तक 14 रन उन्होंने खर्चे हैं, पहले विकेट की तलाश इम्तियाज लेफ्टी को। यहां रन जरूर मिल जाएगा, 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ 40 से बढ़कर 41। अंतिम गेंद का आना बाकी। इम्तियाज लेफ्टी 2.5 ओवर 15 रन। जीशान अली 20, साहिल 17। जीडी टाइटंस के बाद यूनाइटेड इम्पोर्ट श्रीनगर। 11वां मुकाबला दिन रात्रि के मुकाबले में आपके साथ जुड़ेंगे शाम 6:30 बजे से लाइव एक्शन में। सोपोर स्टैलियंस का मुकाबला स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब के साथ बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। सभी बड़े मुकाबले इस बार हवाई यात्रा पे, हवा में आई गेंद पर सेफ स्ट्रोक है क्योंकि उस ओर फील्डर जा रहे हैं, पर उनकी पहुंच से दूर ये गेंद सीमा रेखा से बाहर। चौका मिलता हुआ 4 और खाते में। आवश्यकता थी फील्डर के सर के ऊपर से निकाला, वहां 4 बटोर लिए जीशान अली ने। अली लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 और खाते में, ओवर की समाप्ति। पहला बैटिंग पावर प्ले समाप्त, जो 6 ओवर का अनिवार्य रहता है। फील्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन, 6 ओवर की समाप्ति। सबसे महत्वपूर्ण बात, 45 जरूर बने पर विकेट अभी तक मिला नहीं है जीडी टाइटंस को। जीशान 24, साहिल 17, 45 बगैर नुकसान के। आइए मनोवर्तन हुई। 45 after 6 overs. Steady start. Now an eventful power play. After 2-3 overs, they were just 20 on the board. The last 2 overs gone for runs, plenty of it. And other 2 overs yielded a good result, and that helped them to finish around 145 to 6 overs.
eventful power play at the end. All is well that ends well. It ended well. It ended on a positive note for United Imports. The only centurion we have had in the tournament, that is Sahil Shafi, who's batting right now in the middle, who is battling it out again. This time around he's got a good team to face, and he's got a good team up against and in front, that is Global Dadoo Titans. They do have some of the quality bowlers in the lineup, and some of them, they're posing a threat, potent with the ball. They do have the potential of teasing and annoying the batter. They can unsettle. They do have that caliber and class. Amir Aziz, who has played for State, and is the former State player, left-arm spinner. Sahil, he's making his partner bat around him. That is admirable stuff, as he's making Zishan Ali to bat. Steady start, then allowed Zishan in an over that was bowled by Samir Bell, where we saw a couple of big hits coming into play. 48 for none. He's going to fly it over again in Zishan Ali. Anything flighted, anything. Wherever he will find that kind of a loop, anything short, anything off tracker, and flight and offer, he's going to pounce on it. And talking about that turn and drift on that occasion, Shahnawaz Wani talking about that Amir Aziz, he has that ability. But that one, that's gone flying, soaring into the day sky high, huge and humongous. What a connection, lovely timing. Sahil Shafi, the quickest 250 in the tournament, the quickest 50 in Rad Premier League Season 2. JK Super Cement Rad Premier League presented by Athwas. And he's the quickest 250 and he's the first centurion of the tournament. That one won't find the gap on offside. It's 50 up, it's 55 with that lusty blow of a wide of mid-on. I was talking about Amir Aziz, former State player. He has that knack of picking wickets. He can trouble the batters at times when required. He can weave that magic in web. So is Wasim Raza, the other lad who comes from that long off area. Is he gonna roll his wrist? Is he gonna bowl now? But take a look again. How far? Oh, that's gone miles away. 55 for none after 7 overs. Big shot comes into play. Biggie. And it's gone all the way. Sahil is enjoying his batsmanship in September. The month of September, is enjoying his good run with the bat. Sahil Shafi finding that middle of the bat. Timing is important. A force to reckon. The one who's going to stand tall. Team depends on Sahil. And there is Mr. 360 in the lineup. Khalid Butt, Mr. Dependable. 55. And Zishan will use that power of his arms here. He's going to use that extension at times. Extension of arms. He can also use that long handle to up the tempo, in process to unsettle the bowlers. He can bring in some of the big shots into play. He's going to bring, and he has already done that earlier on within the Powerplay. Quality field, quality. There was a kind of a chance, needed a quick response and a shy, but he did well. He does well in the end. Save 3 runs for his team. The man at mid on. There is a man at long on, but there is a big space.
trying to slog it away. Wasim Raza, he's going to read the batter properly. Something is going and is cooking at the moment. As he's trying to measure the batter properly, what kind of batsmanship he's going through at the moment, how he's getting to the pitch of the ball. Is he lacking somewhere when it comes to the footwork and the timing? The flow of runs is good thing for the batting unit after being put into bat. They were inserted into bat. 59 in the 8th over, little attendance. All watching this game in peaceful atmosphere. That one, it's again in the air. And there was an opportunity. It falls within the dimensions of ground, just inches inside the boundary line. Irfan Mir does well. He cuts it off. It was aerial in the air for a while. And Zishan gets away with that one in the end. Collecting brace, moves to 30 of 19. And this 1, 2, 3, 4, 6 runs coming. And that one, unable to stop the ball. That's going to be runs, 4 of them. And that will disturb his figures. And that will end his over on a bad note as far as Wasim is concerned. Raza gone for 10 in the end. And look at that lad. He is going to flourish. He is trying to break free. And is successful in doing this. He succeeded again. Fearless. Fortune favors the brave. An aerial shot falling in no man's space. The very next ball belted for 4. There's no look back. He don't want to hold on to his nerves. He just here to express himself. And the 2 men in the middle. One is the one who can put that, who can give his side a kind of stability, who's on a good run here, who's having some wonderful time with the bat. Especially the strong middle order batter. He has that role to play. Over the past couple of days, management has decided to open with Sahil Shafi to keep wickets intact from the very word go. It is gonna work and it will work. Something is going on beyond the boundary cushion. What's going on with the advertising hoardings? I think something is disturbing the batter. There is a kind of a reflection. Yes, that's why it's put down on the ground there. The hoarding. Solid defensive shot. Solid in defense. Blocks it to a bowler. There no problem and no possibility of a single. That one deep in crease. Look how deep he's batting. Just well to stop the ball and save 3 runs. Dardish is a good fielder. He's a gun fielder. Sarshil Abbas is 1 stump away. He need a stumping chance to complete 100 stumpings behind stumpers. Is he gonna do that? Is he gonna touch that milestone? Will he get there in today's game? He need an opportunity. Is Amirez is gonna draw him forward? Will he try to launch big? Zishan Ali, 34 of 20. The left hand is known for some of the cracking shots. He's gonna play shots. He's never gonna look at other side. As he feels cagey at times. Or that one is gonna run down to the 3rd man boundary for 4. He will take that. He thought it will run down to the extra cover area. But up the splice. And there was an opportunity.
And these chances are never easy. It's hard to hold on like this when you're close to the stumps. And that one, this area he loves. He's so strong there. Umpire is waiting for the signal, and that's gone into the fence. Is it a 4 or a 6? The confirmation is yet to come. I think strike umpire will ask the TV umpire to assist and help. Take a look again. Slogs that one away. He's acting like a slogger. Will he continue to admire with these slog sweeps, with these slog hits? Take a look where the ball is. Where the ball is. Is it? Did it land within the boundary line? I think there is the reflection going on. These white boards over there. And the color of the ball is white. We're using the white ball in the tournament. Zooming is important here. Zoom up a bit. Where it lands. Where it landed. Did it land within the boundary or beyond the boundary cushion? Take a look again. Take a look. Take a look. Where the ball is. That's given as a 6. So the signal now coming as a 6. TV umpire puts forward that call, and now the strike umpire makes it that it's a 6. He told him that it's gone beyond the boundary cushion on the full. Little fumble. But there was just one, and he's back for the second. 78 for none after 9 overs. No doubt about that. They are thrashing the bowlers now. In couple of overs at the beginning, it looked like that it's a steady start, but who was knowing that these two batters will change the complexion of the game? One bad over where Zishan cashed on and Sahil backing him from the backside and telling him that you have an opportunity, and he batted around and made Zishan Ali look made him bat freely and allowed him to bat in that atmosphere where he could feel that I am batting at free will. And that's the beauty of the captain, that's the beauty of Sahil, the experienced lad on the other side, who's making him bat freely at the moment. And he's taking that pressure off at the moment. And there is no pressure at all on his nerves. It was a nervy moment earlier on when new ball was in play. Now we are done with the 9th one. It's 78 for none. And now he's making Zishan to admire his skills. And he's so skillful. But you have to use this lad and this option cautiously. Sometimes Zishan loses control over the batting, and sometimes he gets overcautious and loses his shape. And we have seen that. There are plenty of examples when we have seen that Zishan losing control and getting out. But today, it's the beauty of Sahil who's making him bat at ease, telling this lad, take it easy. I am here on one side to take that pressure off. I'm here to relieve that. He's carrying on with the nerves of steel as of now. We saw a couple of overs. There was Bell and Raza were taken on. Then they started to carry on with the Sam pace against the likes of other lads. They gone for runs, plenty of them coming. Thank you very much, brothers. 78 for none after 9 overs. And it's going to over number 10, change in the bowling department. Now Gawar Rashid is given the ball. What he will do now? They need a breakthrough badly here. The opening stand is now 78. It's worth 78. Worth watching. People getting their money's worth. They enjoyed that crucial stand. And they're still going strong. There is no look back. I don't think that they're going to hold back. They will try to carry on and cash on. It's 78 for none after 9 overs. 11 overs remaining. 66 balls are going to come. We're into the 10th over. Gawar Rashid is warming up. What will he do in today's game?
The other day he bowled really well. Oh, look at that. Punched. He's going to look for the second. Could be tight. There was a kind of yes, no, yes, no. Batted for 79 runs. Once again, there was a kind of communication gap. What kind of understanding they have built over the past 9 overs? You need to understand that you have been bad since ball 1. Now you need to understand each other. You just need to signal each other. And you should understand by a little response. Or you can simply say, you can show that thumb. You can show sometimes, you can use the shake of the head. You have to wait on these things. The other lad should easily understand and should get that point. Next one. Look, he knelt on one knee against pacer like our Rashid, and there was pace off. He was trying to put that one away. There was an opportunity for Zishan Ali to pack it. Can't send it packing, as he misread it completely. There wasn't pace off. Look, he's telling Zishan now, he's telling Sahil Shafi that he rolled fingers over the ball and I misread it completely. But the way Sahil Shafi is middling the ball, that is lovely. Timing, the touch of the blade, the way he's middling the ball, and that tuck sound makes it so nice and supreme touch. 81 for none, halfway mark into the 10th over. थैंक यू मनवर. 9.381. जीशान 46, साहिल 30. ये पार्टनरशिप 81 की पहले विकेट के लिए बहुत ही बेहतरीन शुरुआत मिली है. फील्डर को बेद नहीं पाए. गफर रशीद का ये पहला ओवर है. एक सफलता के लिए जूझ रही है टीम जीडी टाइटंस, पर अभी तक वो सफलता नहीं मिली है यूनाइटेड इंपोर्ट्स के लिए. इन दो बल्लेबाजों ने जो प्रदर्शन किया है, जीशान अली और साहिल ने, और उसको देखते हुए यहाँ पे पूरी तरह से दबाव में टीम जीडी टाइटंस के गेंदबाज भी. सोच विचार किया जा रहा है क्या किया जाए यहाँ से इस साझेदारी को तोड़ने के लिए. खूबसूरती के साथ एक बार फिर गैप में और गेंद सीमा रेखा से बाहर. 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ 4 और खाते में. बेहतरीन बल्लेबाजी जीशान अली. 50. इसके साथ ही अर्धशतक पूरा होता हुआ. मात्र 27 गेंदों से 5 चौके 3 छक्के, 185 का स्ट्राइक रेट. कमाल की ये पारी. 27 गेंदों से 50, अर्धशतक की पारी, ऐसे समय भी जबकि टीम को आवश्यकता थी. और जीशान अली ने पिछले मुकाबले में उनका योगदान उतना नहीं रहा था, पर इस मुकाबले में, इस मैच में शानदार प्रदर्शन इस बल्लेबाज द्वारा अपनी टीम यूनाइटेड इंपोर्ट्स के लिए. 85. आखिरी गेंद फिर ऑफ स्टंप से बाहर, फिर गैप में गई है गेंद और फिर वसीम रजा से. हालांकि चूक तो होती नहीं है, पर इस बार भी उन्होंने कुछ रन जरूर बचाए. और 2 रन सब, ये चौका अथवा 2 रन, ये देखना होगा, चेक किया जाएगा. अच्छा स्ट्रोक था, खूबसूरत तेज स्ट्रोक. यहाँ वसीम रजा और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई. चौका मिलता हुआ 4 और खाते में. अंतिम गेंद पर चौका. 10 समाप्त. पहला सत्र जो 10 ओवर का है वो समाप्त हुआ है. 10 ओवर में 89 रन बना लिए. 89 बगैर नुकसान के. अगले 10 ओवर 10 विकेट हाथ में. ये लक्ष्य निश्चित तौर पे 200 के आसपास होगा यूनाइटेड इंपोर्ट्स का, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में अभी खालिद भट्ट का आना बाकी है. उसके अलावा अगर हम जिक्र करें बल्लेबाजी में तो मुजम्मिल फैरोज हैं, और उनके साथ साथ अफान वानी है, और कुछ अन्य दीगर खिलाड़ी भी आपकी टीम का हिस्सा है. तो वो विकल्प हैं बल्लेबाजी में. दमखम है, वो क्षमता है बल्लेबाजी में कि आप 200 तक पहुंच सकते हैं. पर क्या जीडी टाइटंस की टीम यहाँ से वापसी कर पाए, ये पहला प्रश्न. और यहाँ विकेट तलाशने है लगातार अंतराल के बाद. ड्रिंक्स ब्रेक ले लिया गया है. ये कहानी 10 ओवर की शुरुआत साहिल शफी और उनके साथ जीशान अली ने की यूनाइटेड इंपोर्ट्स के लिए. वो पहले 6 ओवर जिसमें मात्र 42 रन बने. अच्छा वो सत्र रहा, थोड़ा धीमी शुरुआत दी, पर एक बार सेट हुए दोनों बल्लेबाज और फिर
पीछे मुड़कर नहीं देखा, बेहतरीन बल्लेबाजी। जे की सुपर सीमेंट, बिल्डिंग स्ट्रांग, बनाए मजबूत कश्मीर, करें स्थापित मजबूत कश्मीर। और यही है मजबूत कश्मीर की जमानत, जे के सुपर सीमेंट। रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास। 10 समाप्त 89 बने। और जीडी टाइटंस की टीम सोच विचार में जरूर कि अगला जो सत्र प्रारंभ होने वाला है 10 ओवर का, वहां किस प्रकार से अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस प्रकार की रणनीति योजना होगी, क्योंकि विकेट चाहिए। आपके पास 10 विकेट सुरक्षित हैं, अगर विकेट नहीं मिलते हैं तो फिर कहानी गंभीर होने वाली है, क्योंकि ये चीज तय है। 10 ओवर की गेंदबाजी और 10 ओवर में 89। खूबसूरत वातावरण। पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो बेहतर मौसम है, हालांकि 29-30 डिग्री का तापमान इस समय, काफी तेज तापमान है, पर क्रिकेट को एंजॉय किया जा रहा है बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में। हालांकि इसमें उतनी भारी मात्रा में दर्शक है नहीं, पर जितने भी दर्शक हैं, जितने भी क्रिकेट के प्रशंसक हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को। शाम के समय ठीक 6:30 बजे एक और मुकाबला लेकर के आप तक पहुंचेंगे। मुकाबला सोपोर स्टालियन की शुरुआत होने जा रही है आज इस प्रतियोगिता में। स्पेक्ट्रम किंग्स के साथ उनका पहला मुकाबला आज शाम 6:30 बजे। लाइव एक्शन में आपके साथ जरूर रहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और रेड एफएम जेके यूट्यूब के माध्यम से। वर्धमान की कहानी, गौर रशीद 1 ओवर 10 रन, जीशान अली 54, साहिल 30, 89 बगैर नुकसान के यूनाइटेड इंपोर्ट्स। और जो करंट रन रेट है उसके मुताबिक 8.90, 173 तक टीम पहुंच सकती है। और यहां से विकेट प्राप्त करने होंगे समीर बैल, आमिर अजीज, इम्तियाज लेफ्टी और कुछ अन्य गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा चुका है, पर किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला है। और क्या यहां से अब जाकर के वसीम रजा का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वसीम रजा भी एक अनुभवी गेंदबाज है और विकेट टेकिंग बॉलर है, पर यहां विकेट की आवश्यकता है, एक सफलता की आवश्यकता अवश्य, जल्द से जल्द वो विकेट चाहिए। पर जीशान अली और साहिल ने साझेदारी बहुत बढ़िया सेंसिबल क्रिकेट खेली अब तक। शुरुआत धीमी रही पर एक बार सेट हुए, फिर बेहतर स्ट्रोक खेले। अच्छी गेंदों का सम्मान, खराब गेंदों को सही नसीहत, गैप में गेंद को धकेलने में सफल रहे। वो टाइमिंग, वो प्लेसमेंट, वो शॉट सिलेक्शन कमाल का दिखा इस जोड़ी द्वारा। अपनी टीम यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर के लिए 32 गेंदों से साहिल अब सामने हो गए। वसीम राजा 1 ओवर 10 रन, 1 ओवर की वो गेंदबाजी कर चुके हैं। दूसरा ओवर उनका जीडी टाइटंस के लिए 11वां ओवर उनकी गेंदबाजी द्वारा। और यूनाइटेड इंपोर्ट्स 89 का नुकसान के वसीम राजा नए ओवर लेकर के। पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक गैप में और ये चौका मिलता हुआ। देखिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है इन दो बल्लेबाजों पर, क्योंकि सेट है, निगाहें जम चुके हैं और गेंद फुटबॉल नजर आते हुए। साहिल शफी ऑफ स्टंप पर थी, हल्का सा फ्लाइट दिया जरूर था, पर पहले से चुकन्ने थे स्ट्रोक के लिए, तैयार बैठे थे, क्योंकि जानते हैं अब यहां से रनगति को और ज्यादा आक्रामक शैली से बढ़ाना है। 93 11वें ओवर की गेंदबाजी, साहिल 34 पे। तिरछा रन आपके साथ क्रीज के कोने से, इस बार लॉन्ग ऑन की ओर खेला, सामने कोई मौका नहीं। एक बार फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर, या चौकों की बरसात। लगातार एक बेहतरीन साझेदारी, वो रिकॉर्ड साझेदारी 125 की, जो 10 विकेट से मुकाबला जीता था और पहले विकेट का वो इतिहास है, और उसको आज पूरा करना है इस टीम को, क्योंकि अभी 97 की यह साझेदारी पहले विकेट के लिए, पर तजमुल बाबा और हिनान मलिक ने द रियल सुल्तान के लिए वो 125 रन जोड़े थे। 101 यहां देखना होगा क्या उस रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे, उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे। वो पहले विकेट की साझेदारी जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 में 98 की नाबाद साझेदारी, 10.3 ओवर की गेंदबाजी,
पहली दो गेंदों पर 2 चौके, फिर सिंगल, 9 रन 3 गेंदों से आए। वसीम रजा 19 रन खर्चे हैं। राजू वो भी कोई दबाव नहीं बना पाए, कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। और कारण यह है कि बेहतर बल्लेबाजी सामने। तेज गेंद थी, नीची रही, पैड पे टकराई। अंपायर से प्रश्न पूछा पर स्वीकार नहीं किया। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 10.498। 2 गेंदें बची हैं 11वें ओवर की। यहां वसीम रजा को पिछली गेंद पर विकेट नहीं, पर इस गेंद पर तो विकेट। 98वें जाकर के कहानी हो गई समाप्त इस पहले विकेट की जो चल रही थी। वो साझेदारी समाप्त की वसीम रजा ने। हमने जिक्र किया था एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं। अपने दूसरे ही ओवर में उन्होंने क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। सीधे बल्ले से खेलते तो शायद कहानी कुछ और होती। ये देख लीजिए, और एक हाथ हैंडल से छूटा भी जरूर था। गेंद सीधे स्टंप्स पे जा टकराई, नीची रही, और वसीम रजा को मिलने वाली यह पहली सफलता। जीडी टाइटंस, ग्लोबल डडू टाइटंस को यह पहले विकेट मिलती हुई। और यहां जीशान अली की पारी हो गई समाप्त। पहला विकेट 98 पे गवाया। 11वें ओवर में टीम यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर ने 10.5, वसीम रजा 1.5 में 19 से 1 विकेट। पहले 2 गेंदों से 2 चौके, फिर सिंगल डॉट, फिर विकेट। आखिरी गेंद का ना बाकी। हुरैर सोफी, एक और बेहतरीन बल्लेबाज हुरैर सोफी, उनका अब इस्तेमाल किया गया बल्लेबाजी। नंबर 3 पे हुरैर सोफी, 98 पे 10.5। 11वां मुकाबला। आखिरी गेंद का आना बाकी। 9.05 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए यहां टीम ने। देखना होगा कि जीडी टाइटंस की टीम यहां से वापसी कर पाएगी, या 200 से कम लक्ष्य तक रोक पाएगी टीम यूनाइटेड इंपोर्ट्स को। कोशिश जरूर होगी, प्रयास जरूर करने होंगे, और रोकना भी होगा, क्योंकि 200 से अधिकतम का लक्ष्य आसान नहीं है इस विकेट पे चेज करना। यह अलग बात है कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, पर 200 से अधिकतम चेज करना इस विकेट पे आसान नहीं रहेगा। 98 पे 1, हुरैर सोफी नए बल्लेबाज। साहिल 39 पे अर्धशतक पूरा करने के बाद वापस लौटे जीशान अली पहले विकेट के रूप में। वसीम रजा का शिकार हुए थे। पहली गेंद को गैप में खेला जरूर, पर समीर बेल तैनात थे। उनने गेंद को फील्ड तो कर लिया, सिंगल मिल जाएगा। अंतिम गेंद पर ओवर की समाप्ति। यहां 11 समाप्त, 99 पे 1, यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर। कमेंट्री में परिवर्तन विवरण के लिए मुनव्वर तनवीर। Horar playing that wonderful knock yesterday. Is he gonna carry on where he left yesterday? Will he pick it up from there and continue here to admire his shot selection? 99 for 1 after 11 hours. They're going 9 and over. Amir Aziz, 2 was none for 23. Wicket drought comes to an end with that important wicket of Zishan Ali, thanks to the likes of Wasim Raza, and captain will be delighted as Raza removed that partnership and the set batter. Going deep in crease with ball isn't bouncing that much. I think it's the bowler who's trying to keep it simple. He's trying to go with that slower, and with the lower bounce he's trying to keep it simple. Anything good bounce, anything in his arc, batters are gonna fancy their chances. 100 up in 12th over for United Imports. Nosail is batting freely. Runs keep coming, 101 for 1. 12th over we are in. And the way Sahil is getting to the pitch of the ball, that's good thing. And that's the positive sign. These are the positive signs for United Imports in matches to come, as Sahil is gaining that confidence. He's getting
into rhythm. He's finding those lyrics. He's rhythmic. Horar, he was so nice yesterday. He has got the wide range of shots. Need to display that character. Show those characteristics here. Apply and adjust. On the other side, it's Amir Aziz. The lad is into third over. Now he's troubling Horar Sophie with that drift and turn, and the extra bounce is gonna compound it. It's gonna multiply that pressure. Now the batter has to find a way and an answer to keep Amir Aziz and his threat away. That one aerial into the hands, and Horar Sophie is gone. I was just talking about, I was taking dig at it. He has to balance it. He has to find a way to keep Amir Aziz away, but he hands him his wicket and he's gone. Solid a catch to the man at wide of extra cover. There was Dardish Guni, and for batter it is soft dismissal is taken by Dardish. He reverse cupped it. He reverse cups it, and a good catch. Horar is gone. He was troubled for a while and he couldn't carry on. It was a bit nervy moment, and sometimes these nervy moments can be tricky, and he's tricked in that phase. And he fades away. He's unable to stand equal. That brings Mr. 360 in at number 4. He didn't batter the past couple of days, giving other batters ample time to showcase and present something special. And they have been phenomenal. It's their third game, to be precise, United Imports. It's their third one, and they won 2 on the trot. Third. They're going really nice. It's 101 for 2 after 12. I think, well, we'll have to confirm it, but I think they have been twice here, 101 for 2. As we are in over number 13. The good thing about this Sahil Shafi is not just the first man to score 100 here. He has been quickest to 50. The quickest 50 of 19 balls. It also belongs to Sahil Shafi in the tournament. And the better part of his outing in the tournament is he has found his form here. And now look, the foot movement is so nice there. Head and the posture is, oh, that is amazing. And everything is going perfect. Is going in right direction, in a right way for Sahil Shafi. It's been going nice for this lad, and that's gone wide of the point. Should fetch him 4. Bell tried his level best, but can't stop the ball, and it's going to win the race. Cut away nicely. Look at that shot again. Wonderful connection. Hit hard. And scare cut comes into play. There it goes. Quickly into the fence. It trickled into the fence for 4. Next one, he's lucky. He is so lucky here. And nearly had him. Wasim Raza a bit unlucky. And there was drift and there was space behind that one. It was a quicker one. And they have a couple of records under their belt in the tournament. He was troubled on the other one, but the next one he was shaping for that slug sweep. And the highest first inning score, it also belongs to the United Imports. That's 210. The second best is 198 of Royal Goodwill. Now runs are being scored on these pitches. Talking about the records in detail. They have a couple of records under their belt and impress this young team with just one outsider. 10 of the batters, 10 of the players,
They're coming from vicinity, from out of state. They're the local lads here. And they're bringing a young combination. All the young lads. There is Afan Wani, who's the captain nowadays, who's captaining this side. Khalid Bhatt, Sahil Shafi, Zishan Ali, another terrific left-hand opener batter, wicket-keeper batter. Afan is a terrific middle order. Horair Sofi is there. There is Faizan Aroof, who hurt himself, who got stitches in the very first match on his left hand. Still he bowled that final over where he gone for a couple of runs. And those 2 overs at the fag end were game-changing. They changed the game completely. And those 2 overs brought United Imports back into the game. Amir Aziz and changed it. He bowled 3 overs, 1 for 25. Nice comeback in the another over where he was on money and sent Horair Sofi on his way. Troubled him for a while, then weaved that magic. Perfectly sat him up. 109. The first ball, that's gone aerial, and it's a drop chance. Khalid Bhatt is put down, Amir Aziz and rest of the pack can't believe this. They are shocked for a while, and it's gonna shock them. Because you would never want to see Khalid Bhatt getting a lifeline as he can cash on. He can be ruthless at times, but there was an opportunity. And now that drop chance is going to give him that confidence back. He has his heart in his mouth for a while. Important catch gone down. Dardish and Amir Aziz is into his 4th over. Nearly had the wicket of Khalid Bhatt, but is lucky. And now there is going to be appeal for LBW, and up goes the finger. Up goes the finger. And Ravi Kumar Chaurasia has given it. Would have been 2 in this over, but that catch gone down, put down by the fielder. Was that Salim Mir? He's believed to be gun fielder, but he put down that sitter, a dolly. Juicy one gone down. And in the same over, Chaurasia given it out to LBW. Ravi Kumar Chaurasia given it favor of the bowler. It's 110 for 3. So 2. It's a wicket for Amir Aziz. In this overall has picked up 2. Would have been 3. But that catch put down by Salim Mir. That was important one. We have seen this even in the first game of the day where Sultan Warriors were 98 for 3. From 98 for 3 to 111 all out. And you can go through easily, you can understand the sequence and the wickets falling, tumbling. And here it's 110 for 3 now. 2 wickets falling in quick succession. No big partnership coming in between. Khalid Bhatt is having a word with Ravi Kumar Chaurasia. Was that going leg? Was that going down leg? And Amir Aziz, he says, I don't know. It's up to this standing umpire. He's the best one to judge where the ball was going. Getting ready to operate against Sachin Kumar, the only lad from outside state. Oh, we were talking about earlier on. I mentioned a couple of words regarding that. I will be back to that. I shall come back to that. That's a good shot straight down the ground. He's off the mark straight away. Sachin Kumar opened his account. I started with the words that the only club with having majority of players from heart of state, just one guy coming from outside state. That is so nice. That makes Parvez Saab and his partner very nice in this business. And he has done a very good job, significantly well.
It's Nelson for the loss of 3. Last ball of over number 14 is coming up. Well, in the meantime, that's aerial and up. He show a point. This is Khalid Butt for you. He's going to break free, and look at Amir as he's on his toe, on his knees. He knows that what has been done earlier on, that damage, and this is going to cause that damage. And the lad has that capacity and ability. He has that tactic of dealing with the spin and the pace. He's a great batter. He's known as Mr. 360 in local cricket. And that boundary, he brings up that 4. With that 4, there is going to be addition to the tally. 115 for 3 after 14 overs. Khalid 6 or 4. Sachin Kumar is on 1. And we're talking about that, bringing in young lads that will allow them to express themselves, what they have in store, what they have in kitty, what kind of talent they possess in its abundance, the techniques, the tactics they bring into the play, the variety and the variation they have had. And I think it's a good move. Going with the Kashmiri lads, out of 11, you have 10 from out of state, just 1 from other side. I don't mean that you can't bring others into action inside. You can go with a different company, 7-4 or 8-3. There is no problem with that. But at least try to focus on the local talent, the raw talent we have had in this part of the world. So that will allow our batters, our bowlers, and our talented lads to express themselves. And playing on a podium like this, where you have plenty of portals, web portals, media channels covering your event. You have a JK Sports Time like channel having that much fan base. You have Red FM JK. They have their own yard, own fan base, and they have their own followers. And to grab the attention of those, this is the best platform and podium. You should have gone with the local lads. I'm talking about in detail the old clubs. It was better to focus on the local talent and the raw talent that we have had in this part of the world. But that is a quality. A lap from Sachin Kumar. He gets 4 for that. Improvise to perfection. And Salim Mir, not trying to overhit or hit hard, just using the pace of the bowler to perfection there. And that earned him a boundary. I'll hope sense will prevail in coming days. In other tournaments, they will opt with the local boys, most of the local lads. And that will tell our boys that where you are lacking, what is missing in you, and how to show that temperament, that tenacity and the tenacious character. You have to be strong. You got to be gutsy. Build that mindset. We are meant for the big podiums and platforms. This is just the beginning. Long way to go. 119 for 3. Oh, look at that again. Directed needed. Sign of aggression and intent onto the front foot with that straight bat. Sachin looks, with these 2 shots, it looks like that he is having some positive glimpses. And that one is telling we guys that he has got some glimpses in him. And that one, it was a sight to behold. The way he step out with that straight bat and using the pace of Salim Mir. Unable to find the gap at mid-off, unable to beat the man, but that was a quality straight batted shot. Khalid Butt misread it completely, shortened at the length, kept it away. And Khalid was onto the front foot, trying to chase it down. This is JK Super Cement Red Premier League Season 2, presented by Athwas, game number 11. We have one more game scheduled today. That one, it's in the gap. It's going to run down to the boundary. That's 4. It's come off the bat of Khalid Butt. He's into the double figures. When you put down Khalid like batter, you have to be ready. You have to keep your bowlers and the fielders ready for that toil hard. Only thing that remains to be seen is Khalid gonna carry on and continue. But this time, that's aerial and upish. And it's out of here. What a connection and what a shot. Not trying to overhit. He checked that one in the end. But it's come up the middle of the bat. Enough on it. And it flies all the way. He's got the pace. But look at that shot. Oh, that is the technique. That is the technique. Serious technique. That's why he's known as Mr. 360. Once again, that one gone down to the backward of square. There is a kind of fumble.
Sachin wanted two, won't get the second one. But look at that shot in the next one. Close to the bat face early. Then helping it on its way. 1-3-1 for 3. After 15 overs. They won't let that momentum go other way. They have the clutch on it. You know, breaks are important. You can't be unstoppable at times. And you can't go speedy. Yeah, I know that. That was a wonderful hit. And talking about the fielding, it's another important aspect. On measure-type occasions, we have seen that couple of catches going down. Even in today's match, we saw that important catch gone down. Amir Aziz nearly had him. After dropping a catch, you can't blame your bowler what you have done. Almost provided you a breakthrough, handed you a gift, and that too in the form of Khalid, but you dropped a catch. Then you can't blame your bowler. What are you doing? They're trying to cope up, and the batters are on top at the moment. And this surface, it's assisting batters more than the bowlers. It's better for the batters, but there is something that needs to be done when it comes to the bowlers. They need to mix it up. They need to take that pace off, go with the slow ones, the variety they need to use, try to create that angle bowl from wide up the crease and sometimes close to the stumps. And these are the important aspects. But looking at this one, the assignment we have had at the moment in the middle, there was an opportunity. Catches win you matches. The catch gone down. Khalid moves to 17 of 8. Cover is given the ball again. If they can restrict this side around 170, they will be pretty happy. In the end of over number 20, I reckon. Because they have 7 of the batters in kitty. Guided nicely. That is called delicacy. Delicate and deliberate. Deliberately done. 4 more runs. Khalid Butt agile on that occasion. Adon. Look at that. No problem with the ball. Guided gently and picks up a boundary. No problem with the ball. The execution was right from batter there. 135. Cover Rashid. This time through offside, down towards mid-off. He's going to check his bat. It's fine there. Didn't middle it properly, and there was a bounce where he would have loved to open the bat face with that high elbow. 3/436. United Imports. They won 2 on the trot. They're strong in RPL in South Kashmir. They are strong here at RPL 2 at Bakshi Stadium. They're going really nice. And bringing in all the young lads. They scout out the young lads across the tee. Digs it out. Runs are flowing. And it's the important aspect for United Imports, and Parvesa will be pretty happy at the moment as the boys have decided to step up. Sahil Shafi, the only centurion in the tournament, and he's got another record, that is the quickest 50 of 19 balls, the highest first inning score of 210. That also belongs to United Imports. They're holding a couple of records in the tournament. 137 पे 3 15.3. खालिद भट्ट 22 10 गेंदों से सचिन कुमार 7 पर आज जीशान अली और साहिल शफी ने वो 98 की एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई पहले विकेट के लिए अपनी टीम यूनाइटेड इंपोर्ट्स को। और यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं और इस टूर्नामेंट में सबसे सर्वाधिक स्कोर किसी भी टीम का है तो वो यूनाइटेड इंपोर्ट्स का 210 रन। और शतक यूनाइटेड इंपोर्ट्स के साहिल शफी के पास, वो कीमती मान भी उन्हीं के पास है। एक सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर। खालिद भट्ट और उनके साथ सचिन कुमार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 8.81 प्रति ओवर के हिसाब से। यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर 138 3 विकेट पे। 16वां ओवर पहली पारी, ये 11वां मुकाबला। इसके बाद 4 ओवर और बचे हैं तो कुल मिलाकर अभी भी 26 गेंदें मात्र इस पहली पारी में। 2 गेंदें इस ओवर में और फिर अंतिम 4 ओवर।
26 गेंदों से आप कितने रन, क्योंकि 7 विकेट सुरक्षित हैं, खालिद भट्ट और सचिन कुमार बीच मैदान में, तो एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर इस समय टीम। और 200 से अधिकतम काफी मुश्किल चीजें होती होगी दूसरी पारी में जीडी टाइटंस के लिए। मिड स्टंप पे गेंद लॉन्ग ऑफ की ओर खेले, एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग और दूसरा भी तेजी के साथ पूरा कर लिया। रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बढ़िया, 2 रन और खाते में। आखिरी गेंद होगी ओवर के। जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास। जीडी टाइटंस, ग्लोबल डडू टाइटंस की टीम, जिन्हें टॉस जीतकर आज उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और न्योता दिया बल्लेबाजी के लिए यूनाइटेड इंपोर्ट्स को। और 98 की वो प्रारंभिक जोड़ी ने शुरुआत दी, एक मजबूत आधारशिला प्रदान की अपनी टीम को। बेहतर है, ये कमाल का है और खूबसूरत स्ट्रोकर इस पारी में ऐसे ये स्ट्रोक देखने को मिले हैं। चौका मिलता हुआ सीमा रेखा से बाहर गई है गेंद, अंतिम गेंद पर चौका गौहर रशीद के विरुद्ध बाएं हाथ के सचिन कुमार द्वारा, और इससे पूर्व भी उन्होंने इस प्रकार का स्ट्रोक खेला था। लगातार अच्छी बल्लेबाजी, गति का इस्तेमाल किया, वो भी गौहर रशीद के सामने जिनके पास अच्छी खासी गति है। फिलहाल 16 समाप्ति, 144 पे 3 यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर। सचिन कुमार 13, खालिद भट्ट 23, गौहर रशीद ने 2 में 23 रन खर्चे हैं, 11.50 प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने रन खर्चे हैं। और विकेट उन्हें मिला नहीं है, किसी भी प्रकार का दबाव वो नहीं बना पाए हैं। अगले 4 ओवर यानी कि आखिरी जो 4 ओवर आने बाकी हैं इस पहली पारी में, यूनाइटेड इंपोर्ट्स की टीम चाहेगी अगर 10 रन प्रति ओवर तो 40 और 180 184 तक पहुंच पाएगी। वो कोशिश भी जरूर होगी, क्योंकि 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से विकेट आपके पास 7 सुरक्षित हैं। अफान वानी का भी आना बाकी है, और उसके अलावा कई अन्य दीगर बल्लेबाज आपकी टीम का हिस्सा हैं। आपके पास विकल्प हैं बल्लेबाजी में। मुजम्मिल फैरोज आज टीम का हिस्सा नहीं है। 144 पे 3, 16 समाप्त। पिछले मुकाबले में खालिद भट्ट टीम का हिस्सा नहीं थे, पर इस मुकाबले में एक बार फिर अवसर मिला। अच्छी बल्लेबाजी, 23 पे नाबाद है 11 गेंदों से। पर जीडी टाइटंस को चाहिए एक और विकेट। रनगति पे अंकुश, कम से कम लक्ष्य तक रोकना। वसीम रजा 3 ओवर 28 रन 1 विकेट। आखिरी ओवर अपने कोटे का 17वां ओवर पारी का, 23 पे खालिद भट्ट सामने। पहले गेंद बैकफुट पर जाकर के स्ट्रोक खिला, लॉन्ग ऑन की ओर गेंद गई है, 1 रन जरूर मिलेगा सलीम मीर के पास। 17वें की शुरुआत, रजा का यह आखिरी ओवर। थोड़े निराश जरूर हैं, निराशा साफ नजर आ रही है बॉडी लैंग्वेज से जीडी टाइटंस को, क्योंकि विकेट ज्यादा मिले नहीं है और एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है टीम यूनाइटेड इंपोर्ट्स। अच्छा प्रदर्शन रहा हाल फिलहाल का, अगर देखें उस सीजन देखें तो बहुत ही बढ़िया रहा यूनाइटेड इंपोर्ट्स का। 8.97 रिक्वायर्ड। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने गए जरूर थे, पैड पे टकराई, हल्की सी अपील हुई, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 17 ओवर की गेंद सचिन कुमार सामने 13 पे 7 से रजा के विरुद्ध वो उस पर हार करना चाह रहे हैं, पर इस बार तो प्रहार किया, कनेक्शन मिला, गेंद हवा में, वो 2 खिलाड़ियों के बीच में गिरते हुए। और जब तक खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, एक और सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। इस ओवर की अगर हम बात करें, अच्छी बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है, कुछ सिंगल जरूर मिले हैं। 16.3 के बाद 146 पे 3 यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर। खालिद 24 पे सामने, दाएं हाथ के बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज। ये खालिद का प्रिय स्ट्रोक है और सीधे वहां खिलाड़ी के हाथ में। दर्दिश गोनी ने वहां पर कैच कर लिया, खालिद की पारी हो गई समाप्त और चौथा विकेट गंवाया यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर ने। 17वें ओवर में वसीम रजा को मिलने वाली यह सफलता। बैकवर्ड पर जाकर के संतुलित हुए जरूर थे और ये बेहतर कैच लपका अपने आप को संतुलित करते हुए। और ऐसे में एक हर्डल बना करके जीडी टाइटंस की टीम कोशिश में कि कम से कम लक्ष्य तक रोका जाए। फिलहाल चौथा विकेट 146 पे। रजा इस ओवर में अब तक 4 गेंदों से 2 रन खर्चे जरूर हैं और 2 विकेट उनको मिले हैं अब तक 3.4 ओवर की गेंदबाजी में। अच्छा क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट। 11वां मुकाबला बख्शी स्टेडियम में जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग दूसरा एडिशन 2025 वर्ष में
अथवास द्वारा प्रायोजित 16.4 146 सचिन कुमार नाबाद है और उनके साथ नंबर 6 पे देखना होगा किस बल्लेबाज का चयन किया गया है, क्या अफान वानी का इस्तेमाल किया गया अन्य दीगर किसी खिलाड़ी का। पर यहाँ अभी भी पर्याप्त समय है, आप एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सचिन कुमार नाबाद हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और उसके अलावा रेड एफएम जेके यूट्यूब के माध्यम से यह लाइव प्रसारण बख्शी स्टेडियम से आप तक पहुंच रहा है। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास। 11वां मुकाबला, पहली पारी। और इस समय अगर ओवर्स की बात करें तो 17वां ओवर चल रहा है। 16.4 में 140 रन बने हैं, 4 विकेट खोए, 175 प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाया जा रहा है। और इसी रन गति से यानी 8.76 प्रति ओवर के हिसाब से टीम 176 तक पहुंच सकती है। वो कोशिश भी होगी यूनाइटेड इंपोर्ट्स की। एक बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन रहने वाला है बल्लेबाजों का और बेहतरीन बल्लेबाजी गेंद की पिच तक पहुंचे, खेला जरूर, हालांकि डीप मिड विकेट से खिलाड़ी आकर के आते गेंद को फील्ड करने के लिए, पर दोनों बल्लेबाजों के पास समय था कुछ रन लेने का। 1 रन और खाते में, 147 पे 4। आत्मविश्वास, बेहतरीन प्रदर्शन, आक्रमण, तिरछे बल्ले के साथ गाइड किया। पीछे खिलाड़ी हैं जब तक शॉर्ट थर्ड मैन से गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, पर दोनों बल्लेबाजों ने एक सिंगल और चुरा लिया। यहां अंतिम गेंद पर रन आया, ओवर की हो गई समाप्ति। 17 समाप्त, 148 पे 4। यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर। 3 ओवर का खेल बचा है। वसीम रजा ने 4 ओवर पूरे किए अपने कोटे के, 32 रन देकर के 2 विकेट। 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से उनका इकॉनमी रहा, पर 2 विकेट जरूर मिले। जामिन आशिक और सचिन कुमार, ये नाबाद जोड़ी। और देखना होगा जामिन और सचिन किस प्रकार से यहां से आगे प्रदर्शन कर पाते हैं। एक अच्छा योगदान देना होगा आखिरी 3 ओवर्स में। ये योगदान कैसा रहने वाला है, और आखिरी 3 ओवर में कम से कम 30 रन और, तो फिर आप 180 के आसपास पहुंच जाएंगे। और वो कोशिश भी जरूर होगी, क्योंकि 180 अच्छा लक्ष्य कहा जा सकता है। दूसरी पारी में आपको 129 जरूर होगी, पर 190 चेज हुआ है यहां इस मैदान पे। जहां 191 रन उन्होंने बनाए थे, तो आज उन्हें बेदना है यूनाइटेड इंपोर्ट्स को, जो लक्ष्य सामने होगा। 148 पे 4, 17 समाप्त, 18वें की शुरुआत। इम्तियाज लेफ्टी अब अपने दूसरे स्पेल में, और आखिरी ओवर उनके कोटे का बचा है, वो लेकर के तैयार। 18वां ओवर, 17 के बाद 148। पहली गेंद इम्तियाज लेफ्टी बाएं हाथ से, ऑफ स्टंप से बाहर, विड्थ मिले और सीधे भेज दिया बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए सचिन कुमार के बल्ले से निकलने वाला ये चौका। 4 रन और खाते में, और चौके के साथ 150 रन पूरे होते हुए यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर के ये रन संख्या पहुंच चुकी है 152 पे। वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप से बाहर, और उतना समय मिल गया स्ट्रोक लेने का, और खूबसूरती के साथ ये चौका जड़ा सचिन कुमार ने। इस बार रिवर्स स्वीप खूबसूरती के साथ, चतुराई के साथ, और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछली गेंद पर चौका, यहां सिंगल बटोर लिया। 1 रन और खाते में, 153, 4 विकेट पे 18वें ओवर में यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर बनाम ग्लोबल डडू टाइटंस। ग्लोबल डडू टाइटंस का ये दूसरा मुकाबला है। यूनाइटेड इंपोर्ट्स तीसरा मुकाबला, पिछले दोनों मुकाबले जीत करके आई है यूनाइटेड इंपोर्ट्स। और ग्लोबल डडू टाइटंस ने 1 मुकाबला खेला है, वहां हार का सामना करना पड़ा या दूसरे मुकाबले में। और स्ट्रोक तेज था, सीधे इम्तियाज लेफ्टी के पास, नॉन स्ट्राइकिंग चोट से आगे निकल चुके थे, पर लौटे नहीं पलटकर, क्योंकि तेज थ्रो सीधे स्टंप्स पे। रन आउट के रूप में वापस लौटना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन होता हुआ। यहां देख लीजिए, और काफी दूर रह गए थे। निश्चित तौर पे ये चतुरता
ऐसे समय में भी काम आई और विकेट मिलता हुआ जीडी टाइटंस, ग्लोबल डडू टाइटंस को एक और विकेट, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट के रूप में एक और विकेट गंवाया यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने, 5वां विकेट। पर 150 से अधिकतम स्कोरबोर्ड पे लग चुका है इस समय, अगर लक्ष्य की बात करें 153 पे 4, 17.2 के बाद, और ये रनआउट के रूप में तो 5 विकेट, 17.3 ओवर की गेंदबाजी, 153 पे 5। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। देखना होगा अब अफान वानी आए हैं अथवा किसी और बल्लेबाज का चयन किया गया है, क्योंकि सचिन कुमार रनआउट के रूप में मैदान से बाहर चले गए। जामिन आशिक अभी भी एक पे नाबाद हैं। एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है। 180 190 के बीच टारगेट सेट करने का प्रयास जरूर होगा यूनाइटेड इंपोर्ट्स का। ये विकेट बेहतर है, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दूसरी पारी में भी ये रन बनाए जा सकते हैं। फील्डर के पास तेज थ्रो पर थोड़ा सा दिशाहीन, विकेट कीपर के पास, रन पूरा कर लिया। एक और, उवैस रज़ाक नए बल्लेबाज। जामिन आशिक ने 2 रन बनाए हैं, उवैस रज़ाक अभी खाता खोलना बाकी है। और यहां से लक्ष्य क्या रहने वाला है, कहां तक ये टीम पहुंच पाएगी, ये देखना होगा। लेफ्टी का ये आखिरी ओवर 3.4 में 25, 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की। इम्तियाज लेफ्टी, आज उन्हें विकेट नहीं मिला। बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जहां पे इम्तियाज लेफ्टी के स्पेल में कोई विकेट ना मिला हो। एक अच्छे गेंदबाज हैं। और थैंक यू मनोहर भाई, 900 विकेट का कीमती मान उन्हें रचा है। 900 विकेट एज पर क्रिक हीरोज वो प्राप्त कर चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, ये बड़ा स्ट्रोक है, ये सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों का निर्णय। अंतिम गेंद पर छक्का, 18 समाप्त, 161 पे 5, यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर। Important 6, invaluable and much needed. Zamin Ashik with that lusty blow, and look at that portion, so beautiful beyond the boundary line. Some of the tall lanky OHTs as it gone straight. Look at the dugout, and Nazir, you feel little stingy at the moment. Well, it's called the black coffee, don't worry, and that is its taste, and that will keep you awake in the com box, and you are feeling that little sleepy. That's the beauty of it. And coming back to the game, and these are the moments going on in the com box, so it's better to share with you guys so that you can understand that how tough and how we mix it up, how we balance between different things. It's 1-6-1 for 5. Bell is given the ball, 3 was gone for 24. That third over where he was taken for 2 sixes, and otherwise he bowled 2 tight overs straight away with the new ball. Fresh over, first ball, aerial and uppish, that's into the stands for a 6. And with that 6, 167. Last ball gone for 6 of the other over, and this over the first ball gone for 6. 12 coming. Uwais Razak, he has that ability, he can launch big, and look at that shot again. That is a superb hit. Is he going to carry on with the same pace? But look at that, it was in his arc and it landed beyond the boundary line with ease. Samir Bell, once again he was trying to launch it in the same direction, in the same zone, and it's beaten this time. It keeps slow, but there was enough pace behind. It was a bit quicker. Well, Samir Bell is telling Zamin, why you left the crease? I was having authority to dislodge the bails. But he's telling him that about the sportsman spirit. I won't do this, but you're warned. You can't do this again. You have to ask for the permission. Either umpire or you have to ask me. And it's 167 for 5. 2 blows. The last ball of 18th over and the 19th over first ball yielding those sixes. One in this over, one in another over. That is balancing things here again. Unwanted guest is being removed. 167 for 5. Halfway mark in 19th over.
That's again aerial, but this won't find the boundary as it's gonna drop well short of man there at long on. 168 with 8 balls to go. United Imports, they want to finish on 180 or even beyond that. Only the time will tell us where they will sign it up. It's bright sunshine. It's hot and humid at the moment. Samir in his 4th over, he's gone for 31. Zaman goes aerial. There is a man. He's caught, he's taken. Wicket number 6 down, Gawar Rashid. With ease, sends Zaman Ashik on his way. And there is some delight for Samir Bell as he gets his man. His hard work at the fag and paid off to some extent. As Zaman trying to stand tall, going straight down the ground. Gawar Rashid hold us on to the ball. Good go ball, nice catch. Who's gonna come in next? Who's gonna walk in to replace Zaman Ashik? And these are the sponsors of the tournament. And this one is the special one, the title sponsor. And presented by Athwas. Amir Aziz having a word. That catch gone down of Khalid earlier on. That didn't cost too much, but Khalid scored after that 20 plus. And it was feared that he will get his 50 or 40, 50 runs. But he was unable to convert that start into the substantial one. Can't convert that into a big one. Getting that lifeline that brings Naeem. Walks in at 8. When he is promoted, he has failed. And whenever he sent down the order, he is performing there. Now there is no need to take that response. He got just 7 balls. Now here he can free his arms. He can launch big. He can offer a big shot here. Is he in mood of going big? Will he try to do that? The last ball of 19th over is coming up. Overall 7 balls remaining. One last time in 19th over. Outside edge, Ajishwan. 19 gone, 160. 9 for 6. The final over is remaining. 6 balls are going to come. You are watching JK Sports Time Facebook. Moreover, JK Sports Time YouTube and Red FM JK YouTube. This is JK Super Cement Red Premier League Season 2 presented by Athwas. Match number 11 underway. And the 12th one is coming this evening. And feeling a little tired, I don't know. To be Suport Stallions taking on Spectrum Kings Cricket Club. $169 for 6. And that means the final over is gonna come. Gawar Rashid is going back to the top of his bowling mark. He's gone for 23 of his 2 overs. Economy of more than 11. Shade of 11. And it has been the story today. All the bowlers conceding runs. They were unable to put brakes on. Big shots they require here, and they will be eyeing some of the big shots here. Naeem and Owais, the 2 men in the middle. Owais, Razak will take strike. Gawar Rashid, is he going to chip in with a couple of Yorkers here? Is he going to york them? Is he going to look for that block hole? Let's see. As Gawar Rashid is known for death overs. 170 for 6. 5 balls remaining. Oh, nicely done. Gonna be 2. They're gonna look for the second seriously. And they made it look easy. There is a direct hit. Are they gonna look for third one here? It was a yes, no in the end. And in the meantime, it is 172 for 6. West Razak pinch a brace.
with grace, getting 2. $172 for 6. 172 for 6. We are into the 20th over. 4 balls are going to come. The final over of inning number 1. One more time. That's good intent. That is positive intent. They're going to look for 2 again. Uwais Razak is putting pressure on fielders. And he's unable to deny that second run. Good running. He's keeping fielders on their toes. Quite commendable. Good work. Putting pressure on the fielders. He's giving himself choice straight away. He's running hard between the wickets. 174 for 6. 3 balls are going to come. This is 20th over. Again, a good shot with the shot. It was a kind of a helicopter shot. The 2 men converging can't prevent Uwais Razak from collecting another brace. He's in a race and is running quickly between the wickets. 3rd double in an over. Thrice in an over. Trion. 14 of 8. 2 balls remaining. This time square on the on. Is he going to look for double? No way. There is a man. He was in enough pace behind the shot. And he wasn't very much aware. He thought that it will go down towards mid-wicket. But it goes square on the on. Down to the square leg. Last ball. 177 for 6. United Imports coming up with local boys. And they are setting the tone very high. Once again, it's 177. With the ball to go. Last ball of inning number 1. This is 20th over we are in. As we watch, Gabbar Rashid is gone for 31. Measure to bowlers conceded more than 30. So he isn't new to this. Simply means another one joins the club of bowlers who concede more than 30. Wraps him on pad, clearly going down leg. They're going to look for the second. Leg by signal, they finish on 178 for 6. We shall be back in a while with the chase. Join us for that.
Assalamu alaikum and welcome to Run Chase. Another high scoring encounter. 179 isn't going to be easy. Still a high scoring one. 179 to get from 20 overs. Outwalk the two openers. They're in the middle. There is going to be Sarshil Abbas. And he's got the left hander on the other side. Irfan Mir was marking the fresh guard and is getting in groove and he's gonna get ready. It's going to be Shahrukh Dar to open the attack. He's back into the side for today's game. And in second game for United Imports, he wasn't there. And in the third one, he finds his place in the playing 11 again. Oh, look at that. Warm hug. Customary handshakes. Good moment in the play, in the game and straight away in the match. There as Shahrukh goes across. Well, he was trying to warm up and so is the batter now. Trying to warm up a bit, reflexing his arms. His limb is there. 179 to get from 120 balls. Shahrukh to open the attack. He's got a man in slip cordon. Man at backward a point. Straightish point. Third man. Extra cover. Mid on. Mid wicket. It's a short mid wicket. And with this field, he's going to open the attack. Here comes Shahrukh Dar with ball number 1. Goes. And the first ball guided nicely by Irfan Mir. Just a single and he's off the mark. He's underway. On the very first ball, they are chasing 179. 191 was chased against Global Dadoo Titans few days back by Hillview Rajouri here, and that is, I think, the first successful chase when it comes to the big scoring encounter. 179. And how many runs were chased yesterday? Chased down by Royal Goodwood against Sultan Warriors. They were chasing 178. So there isn't that much difference. I think this is going to be the Sam, the one we saw yesterday. And we can't call it now the high scoring. It's a high scoring, but talking about that, this is going to be the highest chase. We can't say that because highest first inning score was 191 earlier on, and that was chased. The highest successful chase was of 191. We have seen that here. That was between Global Dadoo Titans and Hillview Rajouri, where Hillview prevailed in the end. With few ballers to spare, they registered victory. That was the highest ever chase done by any team in the tournament. And Shahrukh is operating. First ball, there was a single. The second ball is a dot. Sarshil yet to open his account. He's got the boundary right at long on. Heavily coordinated upside for Sarshil Abbas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 men on the off. Just 3 on the on with this field. There's a man at backward scale, like short mid wicket and long on. Up the mark both the batters. Chasing 179. Required rate is 9.08 and over. And they're going at the rate of 4 runs and over. And that is the current rate. Just the beginning. And the 2 men in the middle for United Impo Global Dadoo Titans. There is a huge responsibility on the opening pair. What kind of start they're going to provide? Will they bat according to the situation, accordingly? Or are they going to remain circumspect? Solid in defense again. Just trying to watch the ball. And they will try to understand what kind of a line and length Shahrukh will bowl and what kind of variety he's going to bring into play. And later on, they're going to look for shots here. It's 2 without loss as we are in over number 1. Irfan Mir, and he's got Sarshil Abbas with a slip in place. Works it away nicely. Just the beginning, first over. It won't be easy, and they will try
to be circumspect, and they're trying to do that at the moment. Let's see how they will operate in the coming overs. But first of all, we saw that it was a steady start. When we talk of United Imports, that was a steady start. It looked like that it's going to be a steady one. But all of a sudden, they changed the gears around that 5th and the 6th over. And they were also 20 around that after 3-4 overs. But then they decided to go at it. Is it going to be the same kind of approach from the two batters? But that is a delightful. He opened at the bat face. Couple of bounces into the fence. And that is the strength of Irfan Mir. He's got the nickname, the title of Lara. And look at that shot again. Field restrictions are on. Oh, beautiful. Hold at the pose. Excellent. And I hope that Shaukat has captured that moment. Lifted up nicely. Inside the line. Admire that one. Adorable. And that was scintillating one. With nonchalantness. And ball left to the blade. And goes past everyone into the side screen. I hope Shaukat has captured that moment. He's got that camera spot on there. But that, talking about that stance. Display that stance. Oh, that was so nice. A sight to behold. And talking about Balwinder Kumar Soni ji, he's here. And he's looked tired today. You can see that there's a very smile on his face. 6 man on. When you see that shot, what do you make of that? ओवर समाप्त 6 रन बने हैं। इरफान लारा का वो खूबसूरत स्ट्रोक हस्ताक्षर किए थे बल्ले से गेंद पे। निश्चित तौर पे बेहतरीन वो चौका जड़ा था सामने की और सीधे बल्ले से। कमाल का वो स्ट्रोक था वो कला दर्शाई थी किस शैली के वो बल्लेबाज हैं। पहले ओवर की गेंदबाजी 6 बगैर नुकसान के यूनाइटेड इंपोर्ट्स के बाद जीडी टाइटंस ग्लोबल डाडू टाइटंस 179 बना रहे हैं। मुकाबले को जीतने के लिए इरफान लारा और सरशील की जोड़ी बीच मैदान में। शाहरुख डार ने शुरुआत की गेंदबाजी में। दूसरे छोर से फैजान का इस्तेमाल किया जा रहा है और देखना होगा फैजान अब किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। पर 179 लक्ष्य, इस विकेट पे 190 चेज हुआ है। एलवी रजौरी ने लक्ष्य चेज किया था और इसी ग्लोबल डाडू टाइटंस की टीम के विरुद्ध। अच्छी गेंद थी, थोड़ा उछाल भी था ऑफ स्टंप के आसपास। गेंद सीधे विकेट कीपर खालिद भट्ट के दस्ताने में बगैर किसी रन के। सरशील और इरफान को एक बेहतर शुरुआत देनी है, एक ठोस आधारशिला प्रदान करनी होगी यहाँ अपनी टीम को, क्योंकि जितना वो बेहतर शुरुआत दे पाएंगे, जितना वो ठोस आधारशिला प्रदान कर पाएंगे अपनी टीम को, उतना आने वाले बल्लेबाजों के लिए चुनौतियां आसान हो जाएंगी, वो परिस्थितियां आसान हो जाएंगी, वो किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा। तो कोशिश ज़रूर एक मानसिकता यहाँ पर बल्लेबाजों की कि पावर प्ले का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, वो जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन है उसका लाभ लिया जाए। क्या उसमें सफलता मिल पाएगी ये देखना होगा। फैजान, ये बेहतर है, खूबसूरत है, कनेक्शन सही है और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। बेहतरीन स्ट्रोक सरशील के बल्ले से निकलता हुआ और 6 रन अर्जित किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। फैजान के विरुद्ध ये छक्का, कमाल का स्ट्रोक। सही तरीके से गेंद बल्ले पे आई, अच्छा खासा पावर जनरेट किया वहां पर बल्लेबाज सरशील ने। ताकत लगाई स्ट्रोक के पीछे, 6 रन अर्जित किए। दोहरे अंकों में रन संख्या 12 बगैर नुकसान के। 1.2 ओवर की गेंदबाजी। दूसरा ओवर सरशील 7 पे, इरफान 5 पे और फैजान के विरुद्ध दूसरी गेंद पर छक्का। पिछले ओवर में 6 रन आए थे। संभवतः अच्छी शुरुआत अब तक, पर बेहतर शुरुआत देनी होगी है। मिडिल स्टंप पे सीधे बल्ले से हल्के हाथों के साथ खेला और जब तक मिड ऑन से खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और 13। अच्छी रणनीति शुरुआत में। रिक्वायर्ड रन रेट 8.97 का, करंट रन रेट 8.67 प्रति ओवर। 179 तक पहुंचना है यहां से टीम को और कोशिश जरूर होगी कि अच्छी शुरुआत दे पाए अपनी टीम को। और यूनाइटेड इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें, प्रशंसा करनी होगी इस टीम की, जिस प्रकार से उन्होंने लोकल क्रिकेटर्स को ज़्यादा अवसर दिए हैं टीम में। वो मुजम्मिल, फेरोज हालांकि आज टीम का हिस्सा नहीं है, साहिल, फैजान, खालिद भट्ट, अफान वानी, उसके अलावा
शुरुआत में वो लेफ्ट हैंडर जीशान अली, तो सभी युवाओं को अवसर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि लोकल क्रिकेटर्स को उन्हें ज़्यादा अवसर दिया है। मात्र सचिन कुमार ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाहर से आते हैं इस टीम में। हर अबू तालिब भी संभवते, फैजान आलम, थैंक यू मुनव्वर ये जानकारी देने के लिए। ज़्यादातर खिलाड़ी लोकल क्रिकेटर्स हैं। एक और बेहतरीन गैप में गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक और खूबसूरत स्ट्रोक इरफान के बल्ले से निकलता हुआ। 4 रन और खाते में। ग्लोबल डडू टाइटंस की बात करें तो इरफान लारा का आज चयन हुआ है इस टीम में। हालांकि पिछले मुकाबले में वो टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आज प्लेइंग 11 में जब जगह मिली है तो साबित कर दिया अपने आप को। हालांकि अभी लंबा सफर तय करना, एक बड़ी पारी खेलनी है। मात्र 9 रन अभी बनाया है 6 गेंदों से। 17.1.5 ओवर की गेंदबाजी में आखिरी गेंद का आना बाकी। एक दाएं हाथ का और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बल्लेबाजी में शुरुआत में बहुत बेहतर ये शुरुआत अब तक मिली है। जो 1.5 ओवर की गेंदबाजी, और इस ओवर में 11 रन आ चुके हैं। पिछले ओवर में 6 आए थे। 17 बगैर नुकसान के। ग्लोबल डडू टाइटंस पहली जीत की तलाश में। 2 मुकाबले इससे पूर्व खेले हैं यूनाइटेड इंपोर्ट से, दोनों मुकाबले जीते हैं। बुद्धिमानी का परिचय, बड़े आत्मविश्वास के साथ उसको दिशा दे दी ऑफसाइड में। 1 रन के लिए दौड़ पड़े अंतिम गेंद पर। सिंगल ओवर समाप्त, 2 पूरे 18। ग्लोबल डडू टाइटंस बगैर नुकसान के। Great shot selection. Wonderful shots of the bat of Irfan Mir. On to 10 of 7 balls. That foot straight down the ground. And that one, that was a classy onto the front foot. Through covers for 4. Shahrukh and Faizan, the two pacers from their respective ends operating in today's game. We're done with just 2 overs. They're going 9 and over. Required rate comes down to 8.94 and over. 18 unhurt. Safe start, steady start, and a good one. No problem at all as of now. Shahrukh in his second over. First over gone for 6. Faizan conceded 12. That one. Oh, what a gobble, what a catch. Can you believe? One-handed. Zishan Ali, you beauty. Irfan can't believe. Look at that, he opened the bat face. He's in a shock. Why not? Take a look again. He goes aerial. He wanted to kill that infield. One-handed, look at that. Oh, wow, what a take. One-handed catch. Spectacular one, brilliant. And Irfan is sent packing. Zishan Ali, the man who took that absolute blinder, scoring half century in today's game, now comes up with shocking one there. Irfan, who looked in good touch today. I was just talking about his shot selection. Couple of shots. But now he's gone there. He was trying to open up. And look at that one. I don't think there was enough pace behind the shot. And it goes down towards his extra cover area. And look at that take in a hurdle. Good catch. Nicely held. Wonderful gobble. Excellent catch. And Shahrukh draws the first one as he invited him, lures him. And Irfan trying to open up. There was nothing wrong with that shot. It's the beauty of fielder who made it possible. Converted that half chance. It is exactly half chance. He's gone up the field there for a while. He was in the air. He jumped in air. When he landed again on the surface, it was ball in his hands. Ball in his right hand. Was an easy one.
Brilliant catch. And Irfan, who looked in good touch today, is sent packing. Will be kicking himself. Now Irfan will be telling it was better to keep it down. Why gone aerial? Shahrukh has his man. Shahrukh Dar is among the wickets. There is a slip and third man. Imtiaz lefty walks in at 3. The lefty is going to be risky. And he has that capacity to build that ownership, to set the tone for the big chase. As a skipper has worked for different clubs. And he's a 3-dimensional player. He can field, he can bat, he can bowl. He's having a wonderful record on Cricket Heroes when it comes to the batting and bowling. He has picked up 900 wickets in shorter format via Cricket Heroes app, where we have seen all the records. Some of the big records under his belt. Quite some achievement. 19 for 1. And that one, Sarshil Abbas, is a bit lucky. He gets away with that one in the end. He misread that one completely. And is lucky to survive scare. Look at the smile on his face. Shahrukh Dar knows that he's a bit unlucky. It was Sarshil who's living by luck, by chance there. 1 for 19. We're into the third over. Shahrukh picked up that wicket thanks to the Zishan Ali for that brilliant catch. Not in control, but this one is going to run down to the backward of Skellig boundary for 4. He will take that. Didn't time it properly. He's having some issues with that straighter boundary area. Is there someone who's distracting, or is there any object? He asked at Ravi Kumar Chaurasia. Ravi Kumar Chaurasia, the strike umpire. He had a little chat and telling him he thought out there is something. Look now, that is being cleared there. And look at the split screens. Bat is warming up. He's getting ready with that high back lift. And look at his stance. And once again he's lucky. He gets away with that one. And that one again eluding the leg stump. He followed him. Saw that batter is making little room. He's trying to step bit leg side. Now Imtiaz lefty has a word with Sarshil Abbas that you have to shoulder the innings. There is a huge role on your shoulders this afternoon. You have to bat properly. We need your cameo and quick fire knock, as we lost one of the important members early, Irfan Mir. Wraps him on the pad again. He's trying to flick it around the corner. He's unable to middle it properly. He's somewhere lacking at the moment. Unable to connect that shot again. It's a dot delivery. It's third 23 for the lost one after 3 overs. 179 to get. When we cut shot 23 from 179, how many runs they required in 102 balls? Nazir will come up with a calculation. They are 156 runs behind from 102 balls. Batting side need a partnership. The two of the batters in the middle. The way we saw that Sahil Shafi batting, he made his partner Zishan Ali bat around him, and Zishan scored quick fire 50 and providing his side a chance to finish around somewhere 178, 179. And likewise, one has to step up. And now let's see who's gonna step up. Imtiaz lefty or his partner Sarshil Abbas. Which one will provide that stability here? Afan has got the ball in his hand, the captain upside. 3 overs from pace
And now it's time for the spin. This time Imtiaz left his bit lucky. He is highly lucky that he gets away with that one. Off the inside edge. That saved him. Ball goes past to the stumps, down to the fine leg. Lefty is trying to clear the infield because he knows that this is the power play on. Change of bat for lefty. They're 25 for 1. It's 3.2 done. JK Super Seamen Red Premier League presented by Athwas. Match number 11 underway. The 12th one is coming up. Soports Talents taking on Spectrum Kings Cricket Club. And that's going to be the evening game. Well, power play is on. Restrictions are on. The two men in the middle, they're trying to find the gaps. Losing Irfan in such a manner. They would have never wanted to see the back of Irfan. Even Irfan himself, he was surprised with that catch when he took that blinder at extra cover. Zishan, what a day he's having. A special one, I must say. Scoring 50 and that blinder of a catch. अफान वानी पहला ओवर कर रहे हैं और ग्लोबल डडू टाइटंस ने 26 पे 1 विकेट गंवाया है और यहाँ दूसरा विकेट थोड़ी सी धीमी गति की गेंद स्ट्रोक ऑफर किया नीचे रही गेंद सीधे स्टंप्स पे सरशील अब्बास की पारी हो गई समाप्त और इस प्रकार से दूसरा विकेट हालांकि बहुत अच्छा खेल रहे थे पर यहाँ एकाग्रता भंग हुए बड़े स्ट्रोक के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे अफान वानी के विरुद्ध और अफान वानी एक बेहतरीन गेंदबाज है यहाँ एक और सफलता दिलाई अपनी टीम को और ये देख लीजिए नीचे रहती हुई गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने की जरूरत है पर पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया और स्टंप्स पे जा लगे अफान को मिलने वाली ये पहली सफलता और यूनाइटेड इम्पोर्ट्स को दूसरी सफलता मिलती हुई और एक बार फिर जीडी टाइटंस की टीम शुरुआत में दबाव में 179 रन बनाने हैं 2 विकेट गंवाए हैं और वो भी चौथे ओवर में पर यहां से वापस लौटना है एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता 26 पे 2 3.4 के बाद इम्तियाज लेफ्टी 4 पे अब जाकर के उन्हें ज्वाइन किया है नए बल्लेबाज ने 7.09 ये डग आउट जीडी टाइटंस का और थोड़े से निराश जरूर है इरफान लारा वहां पे वसीम रजा नजर आ रहे हैं उसके अलावा अन्य दीगर खिलाड़ी दर्दिश गोनी जीडी टाइटंस 26 पे 2 3.4 के बाद अफान वानी 3 रन देकर के एक सफलता नए बल्लेबाज दाएं हाथ के गेंद के पिच तक पहुंचे सम्मान दिया वापस खेले बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं 26 पे 2 अथर्व काले नए बल्लेबाज और पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेली थी आखिरी गेंद का आना बाकी अथर्व काले 26 पे 2 3.5 ओवर की गेंदबाजी इस बार अथर्व ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया वापस खेले अफान की ओर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं ओवर समाप्त 4 पूरे 26 पे 2 ग्लोबल डडू टाइटंस की टीम 179 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए अथर्व काले 0 पे और अथर्व के साथ इम्तियाज लेफ्टी पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया था अथर्व ने और यहाँ एक बड़ी पार्टनरशिप की आवश्यकता है क्योंकि 179 तक पहुंचना है तो वो साझेदारी जरूरी है क्योंकि यहाँ से साझेदारी लगेगी तो फिर जाकर के आप उस लक्ष्य तक पहुंचने का सफलतापूर्वक प्रयास कर सकते हैं 16 ओवर का आना बाकी रिक्वायर्ड रन रेट 9.56 का 6.50 का रन रेट अच्छी धूप अच्छा तापमान ये दूसरा मुकाबला आज के दिन की अगर हम बात करें पहले मुकाबले में सुल्तान को अथवास इंडिया 11 ने हराया फिर दूसरे मुकाबले में जीडी टाइटंस को यूनाइटेड इम्पोर्ट्स के विरुद्ध 179 बनाने और फिर डे नाइट मुकाबले में शाम 6 बजे आपके साथ जुड़ेंगे सोपोर स्टैलियंस बनाम स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब 26 पे 2 शाहरुख डार एक बार फिर नेवर लेकर के विकेट कीपर से चौक पीछे गेंद सीमा रेखा से बाहर
उपहार के रूप में ये चौका मिलता हुआ। 4 और खाते में, और 26 से बढ़कर रन संख्या 30 तक पहुंच चुके हैं। शाहरुख डार अच्छी खासी गति का इस्तेमाल करते हैं, पर थोड़ा ऑप्शन से बाहर ये गेंद थी। खालिद भट्ट ने प्रयास किया जरूर था डाइव लगाकर, पर वह असफल हुए और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। चौका मिलता हुआ। इम्तियाज लेफ्टी 8 पे 5 गेंदों से। अथर्व को अभी खाता खोलना है 30 पे 2, 5वां ओवर। एक और विकेट की तलाश यहाँ पे कि शाहरुख डार यहाँ एक और विकेट अर्जित कर पाएंगे। एक विकेट जरूर मिला है 2.1 ओवर में। 15 रन उन्होंने खर्चे हैं। सही दिशा और लंबाई के साथ नियंत्रित गेंदबाजी करनी होगी। दिशा और लंबाई पे एक बार पैर गैप में, और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका। चतुराई के साथ ये चौका बटोरा, 4 रन और खाते में। ठीक तरीके से कंट्रोल में शॉट था नहीं, पर चौका फिर भी मिला और रनों की आवश्यकता है। इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से निकलने वाला ये चौका। वे 12 पर पहुंच गए 6 गेंदों से। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पे चौका। 4.2 के बाद 34 पे 2। इसमें स्कोर ग्लोबल डैडू टाइटंस का। शाहरुख डार के विरुद्ध 2 चौके। हालांकि पिछला जो है वो उपहार के रूप में गया था वो चौका। एक सिंगल मिल गया यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। रन संख्या पहुंचा दी 35 पे 2 विकेट पे। 5वें ओवर की गेंदबाजी पर 2 विकेट ग्लोबल डैडू टाइटंस ने खोया, और जीडी टाइटंस चाहेगी कि यहाँ से विकेट सुरक्षित रखा जाए, और 5 से 10 ओवर के बीच विकेट को सुरक्षित रखेंगे। आप रन गति को बेहतर तरीके से गतिशीलता देंगे, स्कोरबोर्ड को बेहतर तरीके से चला पाएंगे, तो फिर 179 तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि 191 उन्हीं के विरुद्ध चेज हुआ युल राजौरी द्वारा। 35 पे 2, 4.3 के बाद 3 गेंदों का आना बाकी इस ओवर में। अथर्व काले और उनके साथ इम्तियाज लेफ्टी। 35 पे 2 शाहरुख डार अथर्व के लिए। या अथर्व के बल्ले से स्ट्रोक है, ये गैप में, और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका, पर अथर्व का खाता खुलता हुआ, और पूरी अथॉरिटी के साथ ये स्ट्रोक था अथर्व के बल्ले से निकला हुआ। 4 रन और खाते में। 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि। रन संख्या पहुंच गई है 39 पे। 2 विकेट के नुकसान पर जीडी टाइटंस, जेके सुपर सीमेंट प्रीमियर लीग दूसरा एडिशन 2025। और बिल्कुल इतनी जगह जरूर थी और उसमें उस गैप में निकाला और सही निशाना साधा। ये चौका बटोर लिया यहाँ पर। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी मनोहर भाई अतावले हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। 39 पे 2, 4.4 ओवर की गेंदबाजी। अच्छा क्रिकेट, रनों की आवश्यकता। अथर्व सामने। यहाँ हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेलने का प्रयास था, पर बल्लेबाज को फॉलो किया, चतुराई के साथ ये गेंद फेंकी। जैसे ही देखा कि थोड़ा शफल करने लेग साइड में। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 4.5, 39, 2 विकेट पे। शाहरुख डार की इस ओवर में 3 चौके, 1 सिंगल, 13 रन आ चुके हैं 5 गेंदों से। अंतिम गेंद का आना बाकी 5वें ओवर में। अथर्व काले 4 पे, इम्तियाज लेफ्टी 13 पे। 179 टारगेट, 39 बना लिया है यहाँ ग्लोबल डैडू टाइटंस ने। सरशील अब्बास और इरफान लारा जिन्होंने पारी प्रारंभ की थी, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट चुके हैं। ऑप्शन से बाहर एक और बेहतरीन स्ट्रोक गैप में, और फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। दर्शनीय स्ट्रोक यहां पर अथर्व का, और इस चौके के साथ रन संख्या को 43 तक पहुंचा दिया। शाहरुख डार के विरुद्ध एक और कमाल का स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक और शानदार ये स्क्वायर ड्राइव था। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। 5 ओवर की गेंदबाजी, 43 पे 2, और शाहरुख डार के 3 ओवर में 28 रन आए हैं। 1 विकेट उन्हें मिला है। अथर्व 8 पे, 5 गेंदों से। इम्तियाज लेफ्टी 13 पे, और कुल मिलाकर 5 ओवर के बाद 43 पे 2, 9.07 रिक्वायर्ड रन रेट 8.60 करंट रन रेट। 15 ओवर का खेल बचा है। 43 पे 2। Proper shot selection. Some of the cracking shots of the bat of Atharv. And Imtiaz lefty bit lucky. He chipped in with 2 quick boundaries through that slip cordon. 5 gone there, 43 for 2.
Afan, who picked up wicket. In his very first over, he removed Sarshi Labas, who played that shot down the wrong line with a cross bat. There was no bounce on offer. That capped low, and he was undone and sent packing. And that one, what is this? We'll have to wait and watch. It's a no ball, and India's lefty decided to chase it down. And look, Atharva isn't happy. Atharva is telling him it was better to launch it. Why you try to chase it? It's a free hit. He lost control over the ball. It was a beamer. So free hit coming up 44 for 2. And this time that one is going down to the fine leg. Nobody's going to stop it. And they're getting 4 runs for it. And with that 4, it's 48. Free hit. It paid off in the end. Wasn't in control again. No, this time he was in control. I thought it's gone between the legs. But that's a good connection. The small boys are there. And look what's going on. And they're praying. What's going on? This is disgusting to me. They're kissing the turf. What kind of moment it is? Oh, what's going on nowadays? 3 of the boys entered the stadium. They walked in. Now they're going off. They're going to cross the look. Look how they're climbing like that of monkeys. Look how they climb at that grill over there. But this isn't good at all. This is going to bring disgrace to the game of cricket. They were kissing that turf wicket there and then praying with both hands up there. This isn't good at all. It's 48 for 2. Disgusting. And management is trying to cope up with these things, and this is a growing problem nowadays. Across the valley, the small boys entering the stadium doing these things. This time, deep down the crease, keeps it away. He's going to pick one, quick single. Quick single taken in between. It's 49 for 2. Young generation, young boys are doing these things. I call it a silly mistake. They need to mend their lines, mend themselves and ways, what they are doing at the moment. This is another growing concern in Valley. Now whosoever comes in to watch the game, they enter the stadium like this and doing insane things all of a sudden. 2 for 49. And that is going to be wicket number 3. And Atharva Kale is sent packing, who was trying to take that game away, but he's lured into that shot. He was trying to drive the ball, wasn't up to the pitch of the ball. And credit to Anwani for getting rid of Atharva Kale. He isn't happy at all. But that's the beauty of bowler who lures him into that shot. Take a look again. It was a half tracker. He can't believe. He misread it completely. Bending his knees. Trying to get to the pitch of the ball with that long stride forward. Wasn't up to the pitch of the ball. And the beauty of the ball, he shortened at the length. He took pace off the ball. And that trapped the batsman Atharva Kale, who looked in good touch and is off for a long walk. We have seen twice in this innings. One that was Irfan against the run-up play, and he was shocked when he was caught by Zishan Ali. And this one, Atharva Kale, can't believe, against the run-up play as they were trying to gear up a bit. And all of a sudden he got overcautious and it went aerial. The simplest chances for bowler in the follow-through. So wicket number 3 down. That brings the newcomer. It's going to be a pair of left-handers in the middle. It's a left-handed duo. One is Umar Malik and he's got Imtiaz lefty. Now lefty, he has a role to play. There is going to be a huge burden of innings and the chase on his shoulders. It's going to be a nervy moment for Umar Malik. He isn't going through good days, but today he has to prove his mettle and worth. 3 for 49. Umar Malik has to prove and bat according to the situation over here. They need a partnership. The damage is already done. They need to repair that, and the repairment work should begin right now. And look at that one. It stays touch low. You need to get to the pitch of the ball. Playing like this, standing tall, standing still won't help.
You have to find the ball. No foot movement again. And this won't help Umar Malik on a turf wicket. Maybe it's going to work on matty track. But this is going to be a different surface. You will find it difficult to find the ball properly. It's better to use the techniques. And here the bounce is going to remain same. And sometimes it's going to drop off at times. But overall it's going to stay true. And there are some of the areas of concern, the little patches and are coming into play. The patches are in making at the moment. 3 for 49. But the lower trajectory will surely work. And for that, bowlers have to keep it simple and tight. Don't go for the pace. You can try it with odd or two deliveries in an over. The 1 or 2 balls per over, where you can test with that pace. But you have to be at your best. Try to use slower bouncer, and for spinners they need to turn it and they need to find the drift and try to turn it in the air. And up the surface, this surface is assisting the spinners some purchase. It's helping spinners to get some movement out of the surface. 3 for 49. Quality shot again. With that, 50 comes up for Global Dadoo Titans in pursuit of 179. Captain Afan Wani picking up 2 important wickets. Khalid is having a word with Sahil Shafi. The 2 lads were extremely experienced and they're the masters. And that one stays low. There is a fumble. Misfield, a short mid-wicket. I think Umar Malik should try and give Misha to strike back to Imtiaz lefty. Lefty will find a way, and Umar need to get his eyes in and watch the ball, what kind of surface and in what capacity I can deliver. He has to find his comfort zone first on this pitch, on this surface. These singles will help the 2 batters to keep that pressure away. Current and required rate, not a concern, not a big concern at the moment. The wickets column is going to be important. Look what he's doing. He's standing still and trying to work it away with negligible foot movement. And Sahil can easily understand what he's doing. He has to do that as a bowler. As a strong lad of the pack, he has to watch it and carefully observe what the batter is doing, what he's in search of. That one, it's a bad one. Onto the pad line. It's always a bad line. Gonna be runs, 4 of them. Punished. And does well to end the over number 7 on a high. 3 for 56. That odd one out. This is called the clever batting and using that bad ball to perfection. Good adjustment this time. Foot moment was there. Adjustment and transfer the weight. Very watchful. 7 gone. 13 overs remaining. 78 balls are going to come. Little amount of pressure is on their nerves, as it's a tricky situation and it can be nervy for Umar and it can be nervy for Imtiaz lefty too, as they are 3 down. We have seen that Atharva Kale-like batter who has that experience. He brought in huge experience into the game, but he was surprised with that slowness of the deck and the beauty of bowler who took that pace off. Look, there was a kind of a mix-up. The communication gap, that's another problem. These two need to get together and tell each other how to call each other and how to respond to the call. There was a communication gap and Imtiaz lefty, he was already halfway mark. Not a clean stop. Would have been another disastrous move. Would have been a risky one. It would have been Imtiaz lefty running down towards the danger end. Afan is flighting the ball. He's got the boundary riders. He's got long on and long off in. Where he's going to take that flighted one. They're happy to concede ones and twos.
They carry on with the ones and twos. Believe me, they are still in with a chance. They can easily get there. They have to maintain the discipline. Dot is an option, and that dot is an option for bowling unit. They can chip in with couple of dots every over. That will keep them in the hunt in the game. Precision and accuracy is needed by batter Imtiaz lefty, trying to bisect. That's a good shot again. He's gonna pick one here, but Afan, he's looked good in his third over. He's gone for 12 and picking up two important wickets. Sarshilaba sandpacking. Then he sent Atharva Kale back to pavilion, and this team relied on Atharva Kale. They still have Abu Talib to come. 3 for 59. Solid block from Umar Malik to end the 8th over. Just 3 from it. Good over this from Afan, picking wicket in his last over, and this over he has been on money, accurate with tight lines and length. Just 3 from it, and this is called putting brakes on, tightening the nose, drying up runs, not just the boundaries, but he dried up singles in this over. 8 समाप्त 59 पे 3 ग्लोबल डडू टाइटंस 179 के जवाब में अभी भी 120 रन पीछे इस मैच से, इस जीत से। साहिल एक बार फिर अफगान वाले 3 में 12, 4 का इकॉनमी, 2 विकेट, अच्छी गेंदबाजी। उमर मलिक 6 और इम्तियाज लेफ्टी ऑफ स्टंप से बाहर। जगह मिल गई स्टोक को खेलने की, पर पीछे फील्डर तैनात थे। सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ 60 पे 3, 8.1 ओवर की गेंदबाजी। ये 9 ओवर प्रारंभ कर चुके, 10.06 रिकॉर्ड रन रेट पहुंच चुका है। खराब गेंद, दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप पर अपनी दिशा और लंबाई पर नियंत्रण नहीं। ऐसे में रन संख्या की अगर हम बात करें तो अभी भी रन संख्या 61 पे 3 विकेट के नुकसान पे। 9वां ओवर वर्तमान में, उमर मलिक 6 पे। उस साहिल ने इससे पूर्व 1 ओवर की गेंदबाजी की है, अच्छा ओवर कटा था उनका। लगातार थोड़ा अंकुश जरूर है रन गति पे, क्योंकि सिंगल डबल्स पे भी अंकुश लगाने में सक्षम हुई है टीम। वो पार्टनरशिप जिसकी की तलाश है उमर मलिक और इम्तियाज लेफ्टी को, उसकी आवश्यकता इस समय। इस 9वें ओवर की गेंदबाजी में पैड पे टकराई। अपील की जा रही है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है। दौड़ करके बल्लेबाज रन तो पूरा कर रहे हैं, लेग बाय का इशारा आएगा अंपायर का। 1 रन और खाते में। ये रन संख्या अब बढ़ती हुई 62 तक पहुंच चुकी है। अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी। 9वें ओवर की गेंदबाजी, और ग्लोबल डडू टाइटंस की टीम हर संभव प्रयास में, क्योंकि ये जीत अर्जित करनी अवश्य है उनके लिए। एक मुकाबला इससे पूर्व हारे, ये उनका दूसरा मुकाबला है, तो यहाँ पे जीत जरूरी है। इम्तियाज लेफ्टी हल्के हाथों के साथ खेल करके रन दौड़ पड़े। उनकी मानसिकता साफ है, उनकी मानसिकता क्लियर है कि सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना है, खराब गेंद को सही नसीहत देनी है, अच्छे स्ट्रोक खेलने और अच्छी बल्लेबाजी और एक बेहतर तरीके से साझेदारी में योगदान देना है। ये बड़ा स्ट्रोक है सामने की ओर, पर पीछे फील्डर तैनात हैं। आज फील्डिंग भी कमाल की रही है यूनाइटेड इंपोर्ट्स की। आसानी से रन लेने दिए नहीं है बल्लेबाजों को। वही कारण है कि इस समय 9वें ओवर में 64 तक सीमित रखा। 3 विकेट अभी तक मिले हैं इरफान, मीर, सरशील अब्बास और उसके अलावा अथर्व काले। ये 3 विकेट अभी तक जीटी टाइटंस ने गंवाए हैं। यहां कुछ रन जरूर मिल जाएंगे। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बिल्कुल एक कदम अंदर, खुद ब खुद गेंद की गति कम होते हुए, पर उससे पूर्व दोनों बल्लेबाजों ने संभवतः 2 रन पूरे कर लिए। ओवर की समाप्ति 9 समाप्त 66 पे 3। 11 ओवर का खेल, 10.27 तक रिकॉर्ड रन रेट पहुंच चुका है। और यहाँ कोशिश इम्तियाज लेफ्टी और उमर मलिक की, अच्छा क्रिकेट खेलें, गैप में गेंद को धकेलें, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करने के साथ साथ बड़े स्ट्रोक भी जब कभी भी आवश्यकता मिले, खराब गेंद मिले, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि वो समय की आवश्यकता है, वो समय की डिमांड है। क्योंकि जब एक बार आस्किंग रेट 11-12 से ऊपर का हो जाएगा तो फिर मुश्किल है वहाँ पे बल्लेबाजी करना, क्योंकि हर ओवर में 1-2 बड़े स्ट्रोक तलाशना आसान रहता नहीं है। उस प्रयास में अपना विकेट भी गंवा सकते हैं। पर इम्तियाज लेफ्टी एक बेहतरीन बल्लेबाज है,
वो जानते हैं इन परिस्थितियों में किस प्रकार से धीरे धीरे से अब इस पारी को आगे बढ़ाना है। 113 रन अभी भी दूर टीम इस मैच को जीतने से। जीडी टाइटंस, ग्लोबल डडू टाइटंस, 10वां ओवर। एक बार फिर अफान वानी, आखिरी ओवर होगा अफान का। 3 में 12, 2 विकेट उनको मिले हैं। अच्छे गेंदबाजी उन्होंने किया, धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इस बार उठा दिया हवा में गेंद, सीधे वहां पर एक चिप्पे के बाद संभलते खिलाड़ी के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया पर कुछ रन जरूर मिले। रन संख्या 67 पे 3। ये 10वां ओवर है और जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग का कुल मिलाकर ये 11वां मुकाबला दूसरे एडिशन का। अंतिम समय बल्ले का मुंह खोला, ऑफ साइड में उसको खेला। 1 रन दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ। अच्छी रणनीति इस ओवर में। अभी तक 2 सिंगल जरूर आ चुके हैं अफान वानी के विरुद्ध। ये देख लीजिए, तेजी के साथ दौड़ पड़े। ओ, गेंद हाथ में नहीं आया, नेता काफी दूर रह गए थे वहां पर भाग्य ने साथ दिया वहां पर बल्लेबाज का। इम्तियाज 26 पे और 1 रन के साथ 27 पे 8 पे सामने उमर मलिक फिर ऑन साइड में। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1-1 रन से पारी को चला रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि अतिरिक्त जोखिम उठाना यहां पर जरूरी नहीं है। तो यहां से विकेट गंवाया तो संकट में आ सकती है यहां पर जीडी टाइटंस की टीम। 1-1 रन से चलाना होगा इस टीम को। यहां रन नहीं मिलेगा, सीधे फील्डर के पास। आखिरी गेंद का आना बाकी। 10वां ओवर, 69, 3 विकेट पे। यहां आज उतने ज्यादा मात्रा में दर्शक है नहीं पर ये हवाई यात्रा पे सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन, छक्का और वहां स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का इशारा तो अंपायर द्वारा। 10 ओवर की गेंदबाजी और रिवर्स स्विच हिट और 6 मिलते हुए पहला सत्र 10 ओवर का समाप्त। 179 के जवाब में 10 ओवर के बाद ये रन संख्या 75। 3 विकेट पे इम्तियाज लेफ्टी और उमर मलिक बीच मैदान में। और अब जाकर के 104 रन चाहिए 60 गेंदों से। 60 गेंदें मुकम्मल हो चुके, 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। अफान वानी ने 4 ओवर में 21 रन दिए, 2 विकेट प्राप्त किए। 75 पे 3, 10 के बाद यूनाइटेड इंपोर्ट्स के विरुद्ध 60 गेंदें, 104 रनों की आवश्यकता ग्लोबल डडू टाइटंस को। These days he's unable to impress with the bat Afan, but with the ball today, 4 tight overs and the final ball gone for 6. Switch hit comes into play of the bat of Imtiaz lefty, and he knows his role. He has to do that to maintain those standards, as they're still 104 runs behind from remaining 10 overs. This is match number 11, Red Premier League Season 2. The first one and its final was done here. And we're back with the Season 2 from Game 1 till the very last, and we are going to be here. And it will culminate here this season. It did culminate last season here. There was only game which was played and hosted by Bakshi Stadium. Oh, look at this wonderful venue. Lofty mountains, in the lap of mountains there is the indoor stadium. On this portion it's a beautiful place while the cricket is going on. Strategic timeout taken. These are the sponsors. They play crucial role in this event, and thanks to the sponsors of JK Sports Time, we're backing our team. JK Super Cement, build strong, Banai Mazboot Kashmir. In the meantime, players disperse it out again. We have a third one coming up. Spectrum Kings will face the likes of Soport Stallions. They will play their first game of the tournament, and they're going to open their account this evening. Until tonight, we shall come to know. They're going to play their first game, and can they
open their account. Look now, Zishan Ali is having a word with Imtiaz Lefty. How you're bringing in that switch hit or the reverse sweep into play or that reverse lap. There was something going on, and Zishan having a word with Imtiaz. Halfway stage, halfway mark. Fresh show begins, and Umar Malik is struggling here. He's unable to middle the ball. Look at that, it was a full toss. Attempted full toss. Trying to lure him into the big shot, and Umar Malik didn't get hold of that. Unable to hold it. Could only manage two in the form of accrued on that occasion. 77 for 3. That's aerial and upish. Is there a man? And it goes wide of the man into the fence for 4. For a while I thought he's going to be in trouble, but he gets 4 for that. Imtiaz is just trying to back him. Trying to back him and telling him that you can do it. He's giving him a space where he could express himself, and that is another impressive one that was in the gap and yielded a boundary. The next one, once he's lucky, he's living by luck, by chance. Look, he's once again beaten there. It's gone between the bat and the body, eluding the stumps by signal by Ravi Kumar Chaurasia, the young umpire. This over we have seen a brace, double, then a boundary 6 and a single 7. Now they're requiring double figures. It's below 100. And there is a shot for LBW, and up goes the finger. Imtiaz Lefty is given out to LBW. This could be the turning point in the game. And look at Khaled Butt. He's unhappy with the Sahil there. He's telling him why you are flighting the ball. Why you are giving loop and edge to the ball. It was better to keep it simple. Oh, look, everyone is telling him what you did earlier on. And I take a look again. It was pretty plumb right in front. Good call again from Ravi Kumar Chaurasia. And Lefty didn't argue. He started to walk back. He knew that he was plumb in front. He missed. It's just like that. You miss, I hit. And that is the story. That sums it up. He's on his way. It could be the turning point in the game, Nazir. Let's see. What do you make of it? 97 from 56. देखिए T20 के हिसाब से देखा जाए तो उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, पर विकेट हाथ में रखना ज़रूरी है जीडी टाइटंस को, क्योंकि ग्लोबल डडू टाइटंस को इम्तियाज़ लेफ्टी का एक कीमती विकेट गंवाना पड़ा है। LBW करार दिए गए। धरतीश गोनी एक अच्छे बल्लेबाज है, हालांकि उनके पास भी वो क्षमता है। उमर मलिक बेहतरीन बल्लेबाज है। आने वाले कुछ विकल्प ज़रूर हैं, पर यहाँ से एक बड़ी साझेदारी चाहिए, क्योंकि 56 गेंदों से 97 रन बनाने 6 सुरक्षित हैं, तो अभी भी आप उस लक्ष्य के नज़दीक पहुँच सकते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो पार्टनरशिप होगी। Partnership will keep their hopes alive in today's game. Dardish comes out to bat now. 97 aided from 56. Number of balls. They do have 9 overs and 2 balls to come. This is 11th over we are in. Now there are 6 wickets in kitty. You just need to up the tempo a bit. Driven straight back along. Another dot ball. Dardish Goni walks away, trying to avoid that meet-up. I think he's just trying to focus on the game. He don't want to get distracted. You don't want that kind of a distraction, and with that single, there is addition to the tally. There is something going on between Zishan Ali and Dardish Goni. Sahil telling him that it's okay, just cool down a bit, walk away. 96 from 54. And sometimes cricketers get angry, showing a kind of anger, or they show that anguish, losing cool. These are the gentle lads. They need to understand it. Don't be harsh. It's 4 down, 83 on the board, 96 needed. Still a good figure on the board to chase. Won't be easy to climb to get there, but it's gonna take time. It's gonna take huge dedication, high determination.
96 away, changing the bowling. This lad is batting with a different tactic and the technique. He's a different technique. Sometimes it looks like that he's blocking his shoulders. He's trying to close up his arms. Oh, look at that. That is a glorious hit. He's got the power and fielder can't stop the ball. And that's the beauty of this lad. Look, he's trying to lock off his arms there. And with that shot, that has gone like a tracer bullet at a rapid pace. Fielder unable to stop the ball. Look what kind of pace he's generating. Swept. That one is going down to the square leg. With that single, it's 88 for the loss of 4. 91 away from 52 balls. The equation is 91 of 51. Saro and has got Ravi Kumar Chaurasia, the TV umpire. Mr. Shaukat Mehdi. Now there are bigger shades right now visible here at the field. That's a good looking shot. Singles, they need to fetch ones and twos. The two batters in the middle need to opt for ones and twos, doubles, and at times look for threes. That Trion will also help. You have the areas, look on that portion of offside, backward a point, and the straightish point. There is a big space, driven straight. Bowler trying to latch on it, Sachin Kumar, but the power of batter denied that chance, that opportunity. 90 for 4. 179 is the target. They're 89 more runs behind from 49. Last ball. Look how lucky he is. He's the luckiest player today. This is the 8th occasion when he gets away with that one. Once more, ball eluding the stumps, not going on to hit, eluding the stumps, going into the safe hands. 8 overs, 89 to get. 11 an over is the asking rate. It's climbing, it's mounting. Who knows, it may be towering at one stage, but that wicket of Imtiaz lefty is going to be crucial, and I think that's where things change it. जब इम्तियाज लेफ्टी का विकेट गिरा और वहाँ से थोड़ा सा रनगति पे अंकुश ज़रूर लगा है, वो विराम ज़रूर लगा है. 89 चाहिए 48 गेंदों से. उमर 16 पे, दर्दिश 7 पे, 11.13 तक रिक्वायर्ड रन रेट पहुँच चुका है. साहिल एक और ओवर लेकर के 3 ओवर में 20 से 1 विकेट, या आखिरी ओवर उनके कोटे का और 13वां ओवर पारी का. नीचे रही गेंद, ऑन साइड में खेले, अच्छा स्ट्रोक है, पर पीछे फील्डर तैनात जरूर है. केवल एक सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को. 47 से 88 की आवश्यकता. यह है इक्वेशन, यह है आंकड़ा इस मैच में. 6 विकेट सुरक्षित है. 91 पे 4, 12.1 ओवर की गेंदबाजी. उमर मलिक सामने. साहिल ने अच्छी गेंदबाजी अब तक की है. खराब गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर उड़ा दिया उसको, और गेंद सीधे स्टैंड्स में. 6 रनों का निर्णय अंपायर का आता हुआ. छक्का मिला यहाँ टीम ग्लोबल डाडू टाइटंस को, और इस छक्के की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि. तो लेग स्टंप से बाहर अपनी दिशा और लंबाई भटके जरूर थे, और पूरा समय मिल गया वहां पर स्ट्रोक खेलने का, 6 अर्जित करने का. 6 रन और खाते में, और 6 रनों के साथ अब 97 पे 4, 12.2 के बाद 82 की आवश्यकता. 46 के दुकान बाकी. साहिल इस ओवर में अगली बार, इस बार पैड पे टकराई, अपील पर स्वीकार नहीं किया. 1 रन पूरा किया. दूसरे की मांग है, तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने. लेग बाई का इशारा. 2 रन और खाते में, और 2 रनों के साथ रन संख्या 99 पे 4. 80 रन चाहिए 45 गेंदों से. अरे अच्छा मुकाबला, पर ये पार्टनरशिप आप यहाँ से 15-16 ओवर तक ले जाएं तो फिर एक चुनौतीपूर्वक यह मुकाबला रह सकता है. एक कांटे की मुकाबला रह सकता है, कांटे की टक्कर का मुकाबला रह सकता है. फिर लेग स्टंप की शेप में तो दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है. लेग स्टंप के आसपास भटक रहे हैं अपनी दिशा और लंबाई से. हल्की सी फिसलन जरूर भी बल्लेबाज द्वारा. ये गेंद हाथ में आई नहीं. एक विकेट यहाँ पे रनआउट के रूप में मिल सकता था, काफी दूर थे स्टंप से, पर
और खालिद भट्ट के हाथ में गेंद नहीं आई और 2 रन और खाते में 100 रन पूरे होते हुए यहाँ ग्लोबल डडू टाइटंस के 101 पे 4 12.4 वो फंबल जरूर हुआ उनसे गेंद हाथ में आई नहीं खालिद भट्ट द्वारा और एक रनआउट का चांस उन्होंने मिस किया ये देख लीजिए यहाँ पे अवसर था जरूर पर यहाँ अच्छा स्ट्रोक है और कोई मौका नहीं गैप में गई है ये दूसरा फील्डर है नहीं सीमा रेखा से बाहर चौका मिलता हुआ 4 और खाते में दर्दिश गोनी और उनके साथी खिलाड़ी उमर मलिक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं रनों की आवश्यकता भी है अच्छा स्ट्रोक था ओके चुना था वो खाली इलाका चुना और 4 रन और खाते में जोड़ लिए 4 रनों के साथ रन संख्या 105 पे 4 12.5 के बाद अंतिम गेंद का आना बाकी 74 चाहिए 43 गेंदों से एक छक्का एक चौका अब तक अच्छी बल्लेबाजी एक और बेहतर स्ट्रोक कोई मौका नहीं एक बार फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए एक और चौका उमर मलिक के बल्ले से निकलता हुआ और इस ओवर में अच्छे खासे रन खर्चे हैं गेंदबाज साहिल शफी ने अब जाकर के यूनाइटेड इंपोर्ट्स की गेंदबाज पर थोड़ा सा दबाव जरूर आएगा क्या बल्लेबाजी इस ओवर में की है इस बाएं हाथ के बल्लेबाज उमर मलिक ने 30 पे नाबाद है 26 गेंदों से 13 समाप्त 109 पे 4 70 चाहिए 42 गेंदों से 10 and over is going to be the asking rate, and who would have thought that Umar Malik will turn the tide like this? And everyone is talking about that Umar is looking a bit lazy with the bat, but all of a sudden I think Sahil Shafi lost his line and Umar cashed it on and couple of boundaries and that 6. He's looking a bit lazy, but the way he played here, that has been a remarkable turnaround. Excellent knock, brilliant approach with the bat, excellent batsmanship, brilliant. He has been so nice with the bat. And Nazir, everyone is talking that he's looking little uncomfortable there, but he has shown that comfort zone and playing some of the quality shots. Seventy need from 42 balls. 10 and over is going to be the asking rate. 70 away, 7 overs, 6 wickets in kitty. Sachin Kumar. Oh, this could be tight, but he's gonna decide against it. He decided already. I thought he's gonna shy it in, but he decided against it. 70 from 41. Precious dot, and Sachin Kumar, he has different ideas in his mind. Oh, that one again, right on money. Good delivery. Good one from Sachin Kumar. And keeping Dardish like batter true and keeping him under check. Denied him any chance there. Only a single. 69 away from 40 balls. Sachin Kumar 1.2. None for 8. This is his second over. Overall, they're 69 behind from 40 balls. Now Umar Malik has decided to take him on. He has no other option. He has to go big. Look, with every dot ball there is the required rate which is going upwards. There is steep increase. 69 from 39. This time he connects. And that will bring Dardish back on strike, and the last over prior to this one, Nelson on the board. Sahil Shafi gone for plenty in that over. That was another turnaround, a kind of a turnaround to some extent. But Sachin Kumar, he knows how to control the two batters in the middle. Look, he's looking at the square leg. It goes straight down towards mid-on area. Good running between the wickets. Couple more here. 66 from 37 balls. This over just 4 or 5 balls. One big hit will set the tone. 1, 4 or a 6. Or is he going to keep the strike? For that he has to scamper through for a single. What we are in for. Is he going to go big? Or is he going to keep it away? Oh, he couldn't release the ball. It's going to go back. 66 to get. Dardish
he will keep the strike for the next over. Another tight over from Sachin Kumar. With the economy of 6, he bowled 2 overs. 65 to get from 36 balls. 10.83 an over is the asking rate. Dardish goes across having a word with Umar, telling Umar Malik that you have to take no risk. You need to break free. You have to make your intentions clear, as we are in desperate need of 65 from remaining 6 overs. We need those 65 to chase. We're already 1 down in the tournament. They lost the first game, their first game of the tournament, and overall it's match number 11 underway. The 12th one is coming this evening. We'll be having 2 big teams in the middle. One is going to be Sopor Stallions, and they will be facing the likes of Spectrum Kings Cricket Club. This evening, in that game number 12 of JK Super Seamen Red Premier League presented by Athwas, Faizan is back into the attack. Captain goes back to Faizan Alam. Faizan will operate. He's got the ball in his hand, trying to warm up a bit, as he was away for a couple of overs. He's brought back into the attack. He's given the ball again. He need to warm up a bit, to warm his muscles so that he can operate freely. He can release his muscles. Six over 65 to get. 6 wickets in kitty. Down to Dardish and Umar Malik. Umar is on 31 of 28 balls. 12 from 11. Dardish. Faizan has got the serious pace. Very first ball guided. Chance of a run out. Overthrows. And this is going to cost them an extra run here. Horar knows that Dardish Goni is going to be danger man. It's better to hit that non-strike and try to catch him short off his crease. 63 away. First ball brace. Let's count the number of balls in this over. How Faizan will keep it tight. Is he going to keep it tight? Will batter manage to break free? That's a good shot. Straight like an arrow. So nice connection there. And it's going to fetch him another brace here. First ball double. Second ball brace. It's couple and couple. Is he going to double it with a boundary on the very next ball? 118 for 4. They require 61 from 34 balls. We're into the 15th over. Equation is 61 from 34. Dardish. That's aerial and uppish. Over the man at extra cover. This will find the fence. He did that in style. I think he heard me, Nazir. And he doubled it with the boundary. Now it's 8 of 3 balls. अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में. 2-2 फिर चौका. दर्दिश के बल्ले से कंट्रोल में था ये स्ट्रोक. बेहतर शॉट. चौका मिलता हुआ 4 ओवर खाते में और 4 रनों के साथ रन संख्या 122 पे 4. 57 चाहिए 33 के दूसरे. दर्दिश 20 पे सामने. एक और सिंगल के लिए दौड़ पड़े. अच्छी मानसिकता, अच्छी रणनीति. 1 2 3 4. दिलचस्प आंकड़ा. 14.4 1 2 3 4. 123 पे 4. 10.50 प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए. 32 गेंदों से 56 रनों की आवश्यकता. उमर मलिक 31 पे और दर्दिश गोने 21 पे. फैजान का ये दूसरा ओवर. 1.4 ओवर में 21 रन. 1 विकेट की तलाश. 2 2 4 8 और 9 रन आ चुके हैं ओवर से. और अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी फैजान के इस ओवर की अगर हम बात करें. 32 गेंदें 56 रन चाहिए जीत के लिए. 6 विकेट सुरक्षित. उमर सामने. और इस बार उछाल था गेंद में. स्ट्रोक खेलने का प्रयास था पर पहुंचे नहीं. गेंद की अतिरिक्त उछाल किससे चकमा खाया और गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के. 123 पे 4. अंतिम गेंद का आना बाकी. और उसके बाद फिर 5 ओवर यानी कि कुल मिलाकर 31 गेंदें बची हैं. 56 रन चाहिए ग्लोबल डडू टाइटंस की टीम को इस मैच को अपने नाम करने के लिए. यूनाइटेड इम्पोर्ट श्रीनगर के बाद ये दिन का दूसरा मुकाबला है. टूर्नामेंट का 11वां मुकाबला
और 12वें मुकाबले में आपके साथ जुड़ेंगे 6:30 बजे। और यहाँ पर चतुराई के साथ गति परिवर्तन चकमा दिया बल्लेबाज को, पढ़ने के बाद नीचे रहती हुई गेंद सीधे खालिद भट्ट के दस्ताने में, अंतिम गेंद पर रन नहीं। ओवर समाप्त, 15 पूरे 123 पे 4। 30 गेंदें 56 रनों की आवश्यकता और 5 ओवर में 56 रन बनाने हैं। 11.20 प्रति ओवर के हिसाब से आसान नहीं है। आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है और जितना और ऊपर होता चला जाएगा उतनी दिक्कतें होंगी ज़रूर यहाँ ग्लोबल डैडू टाइटंस के लिए, क्योंकि हर ओवर में आपको करीब करीब 11 साढ़े 11 के आसपास रन बनाने हैं। 11.20, 5 मात्र ओवर का खेल। ये निराश चेहरे इस बात की पुष्टि करते हुए कि क्या यहाँ से एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस लक्ष्य को पार किया जा सकता है। हालांकि वसीम रजा का भी आना बाकी है। और क्या ये जीत अर्जित कर पाएंगे? क्या पहली जीत यहाँ ग्लोबल डैडू टाइटंस की टीम अपने पाले में ले पाएगी अथवा नहीं? ये हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास में। दर्दिश गोनी 21, उमर मलिक 31, 30 से 56। सचिन कुमार 2 ओवर 12 रन 6 का इकॉनमी। तीसरे ओवर में अपने कोटे के और 16वें ओवर में पारी के बाएं हाथ से पहली गेंद। इस बार रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास था, स्टंप्स के सामने पैड पे टकराई, अपील हुई, स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से एक और एलबीडब्ल्यू आउट करार दिए गए। विकेट मिलता हुआ यह 5वां विकेट गंवाया है डैडू की टीम ने। हम बात कर रहे थे कि ग्लोबल डैडू टाइटंस को एक पार्टनरशिप की आवश्यकता, क्या उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? देख लीजिए, बिल्कुल स्टंप्स के सामने और एक और विकेट का पतन। एक और विकेट गंवाया है। आवश्यकता नहीं थी इस प्रकार के स्ट्रोक के, पर अलग प्रकार का माइंडसेट लेकर के उतरे थे। रन गति को बढ़ाने का प्रयास था पर चूके और गेंद सीधे पैड्स पे और इस प्रकार से एक और विकेट का पतन। और अब जाकर के क्या वसीम रजा बल्लेबाजी के लिए आएंगे, ये देखना होगा नंबर 7 पे। और इस समय जो रन संख्या है वसीम रजा, जी हाँ, एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनमें क्षमता है और बड़े स्ट्रोक खेलने की, इन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने की, और करना भी होगा यहाँ से अगर ग्लोबल डैडू टाइटंस की टीम को इस मुकाबले को जीतना है यूनाइटेड इंपोर्ट्स के। पर यूनाइटेड की टीम एक हर्डल बना करके एक बार फिर आपस में बातचीत मंत्रणा कि यहाँ से जल्द विकेट प्राप्त करने हैं, रन गति पे अंकुश लगाना है। और ग्लोबल डैडू के विरुद्ध ये लगातार एक और मुकाबला जीत करके इस टूर्नामेंट में ये लगातार तीसरी जीत होगी यदि यहाँ से यूनाइटेड इंपोर्ट्स की टीम जीत अर्जित करती है। इससे पहले दोनों मुकाबलों में जीत अर्जित की है। 26 चाहिए 29 गेंदों से 123 पे 5। और वसीम रजा शून्य पे, नए बल्लेबाज उमर मलिक 31 पे 11.59 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। अरे ऐसे में 29 गेंदें 56 की आवश्यकता। 11.59 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं टीम को। वसीम रजा अब स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, अंपायर से गॉड लेने के बाद बिल्कुल तैयार। और इधर सचिन कुमार पहली गेंद पर एक खुराक उन्हें जरूर मिली है विकेट के रूप में। नई ऊर्जा और उत्साह के साथ भी गेंदबाजी जरूर करेंगे, पर वसीम रजा किस प्रकार से उत्तर देंगे गेंदबाज सचिन कुमार का, ये देखने वाली बात हो गई। 123 पे 5, 15.1 ओवर की गेंदबाजी, 16वां ओवर, 5 गेंदों का आना बाकी। कुल मिलाकर 29 गेंदें 56 रनों की आवश्यकता। 5 विकेट हाथ में। वसीम रजा सामने, उमर मलिक सेट बैटर 31 पे 30 गेंदों से। वसीम के लिए पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी। ये गेंद उस गेंद का पीछा जरूर किया था। लपेट कर ऑफ स्टंप पर आती गेंद को ऑन साइड में समझते खेलने का प्रयास था, पर वो संपर्क नहीं हुआ और गेंद उनकी रेंज से भी दूर थी। और एक और डॉट गेंद यहाँ पे 28 से 56, 123 पे 5। यहां कनेक्शन ये तलाश रहे थे वसीम रजा और वो मिला भी सीधे स्टैंड्स में। 6 के साथ स्वागत किया आते ही और इरादे स्पष्ट कर दिए। अपनी पुष्टि करते हुए इस छक्के के साथ सचिन कुमार के विरुद्ध वसीम रजा के बल्ले से निकलने वाला यह दर्शनीय स्ट्रोक। और पिछली गेंद पर भी इसी प्रकार का स्ट्रोक, पर वो ऑफ स्टंप से बाहर थी, उस तक पहुंचने का दूर से प्रयास किया था, पर इस बार ठीक तरीके से गेंद के पीछे आए और 6 अर्जित किए। कनेक्शन सही समय पे मिलन भी हुआ। 6 पर पहुंच गए। 129 पे 5, 50 चाहिए 27 गेंदों से 15.3 के बाद। Slog sweep, and this is Wasim Raza for you. He unleashed on that occasion. And what a shot, what a connection, lovely piece of timing. When they need it badly.
59, 49 needed. 49 needed now. After wicket. That was a wide ball, now a 6 coming. I think they want to refer that to TV umpire now, but that's gone now. That was a wide delivery. Will they check now? It's 130 for the loss of 5. 49 needed from 27 balls. And that 6 is bringing Global Dadoo Titans to some extent back into this one. And take a look at their dugout there. Sachin Kumar conceded a 6, and that was a lusty. That was a big shot and a big strike of the bat of Wasim Raza. That's gone wide of the mid wicket. The fielder in the deep, unable to get there, and it was all the way beyond the boundary cushion. First he was interested, but he saw the ball. It's gone and going. 49 needed from 28. That one, it's aerial again. Where is this one going? Is that man in the play? No way. That's gone into the crowd again, into the stands. It's gone 7 rows back. Look, Raza. He is making the ball fly. He's given wings to it. As it leapt to the bat and it flown away. It flies and flies. It's gone. Dismiss you. Second 6 of an over. 43 needed from 27. Again in the same direction. Eyeing another big slog sweep. Are they going to look for the second? I don't think so. Just a single there. 42 needed from 26 balls. And this over. 6, 6, 12, 13, 14 of 4 balls. And a wicket falling. He's made it look easy in this over. 42 behind. 26 balls remaining. 4 overs and 2 balls. Raza having a bid with Umar Malik, as Umar Malik used 30 balls for his 31. And he's beaten again. Another dot ball. And look, Raza is telling him, please hit the ball. Please make a connection. And lay bat on to the ball. What he's going to do this one. And that is going to be a tight one, but umpire looks unmoved. So no problem with that one. It's leg byes to end the over number 16. 138 after 16 overs. 41 needed from 21. They require 10.25 an over. Raza 2 strikes in an over. Double strike. And keeping their hopes alive, Sachin Kumar, he was surprised. 2 slog hits coming into play. Sahil has got the ball again. The other over that was expensive again as to Umar Malik. And that was the only over that improved the strike rate of Umar Malik. Otherwise, he was going with the dots and dots. It was all about dot deliveries here and there. 138 for the loss of 5. 41 to get from 24 balls. 4 overs. Crucial passage of play. Faizan has got the ball. Raza on strike. It should be Raza on strike, or it's Umar Malik on strike. It's Umar Malik on strike. What's going on? To me and to we people, it should have been Raza, but it's Umar Malik on strike. That's that's funny here. 41 needed from 24. The first ball of the fresh over. He wanted a single. And this could be... we'll have to wait and watch what's going on. Oh, it's a kind of a brand fade moment. It would have been Raza on his way. And look at Zishan Ali. Look at Zishan Ali. He's a young lad. He should understand that Raza is a legendary Raza. Look, he's just trying to up the tempo. Raza is telling him, take it easy, boy. I have gone through basic level cricket. Just walk away. And look at his calm behavior, showing that calmness, the temperament he's shown there. That one, it's in the gap. But there is Sachin Kumar, who protected it in the end, was there to stop the ball. I thought it's in the gap. It looked like that will run away. But Sachin Kumar was very much there. Just a single there
22 balls, 40 more needed. Dadoo Titans to walk away with invaluable 2 points here. Faizan has got the ball. He's in his third over. None for 22. What can Raza do against the likes of pace? We saw Sachin Kumar belted for 2 big shots. He smoked twice in an over. Is he going to try big shot here against Faizan, who's got the pace? And that one, it's wide of the off, signaled as a wide. You need to reload and rebold. Faizan trying to keep it away from Raza's arc, and Raza was trying to step aside and then trying to hit it, heave it. 39 needed from 22 balls. Evenly poised a chase here at Bakshi Stadium. 140 on the board, 39 away. Which way Raza will go? Change of pace, cleverly done. Lap shot comes into play. They're going to try for the second one, and he's going to look for the 2, and in the end made it look so easy. 37 from 21, but he mixed it up. Credit to the bowler. And Raza needed pace, would have been 4 or a 6, but he took that pace off, mixed it up nicely, and Raza is going to try these lap shots. He's going to go with that scoop shot or the reverse lap, and sometimes that lap shot is going to come into play. Sometimes he's going to go with that ramp. 37 away from 21. 142 for 5. 37 away. Global Dadoo Titans, they need to win this one badly. Does well again. He took pace off. This could be tight, but Umar Malik is lucky to survive, and they're not going to attack that strike end, because they know that Umar Malik is somehow playing a part for the bowling side here. He has faced 34 balls for his hot for 31. Only over where we saw Umar connecting the ball, that was Sahil Shafi's over, and that was expensive of the lot. It did turn the tide for a while, and Faizan is happy, and he too wanted Umar Malik on strike. Is he going to chip in with 2 dots here? What can Umar Malik do now? 36 away. Is he going to unleash his old Umar, the experienced Umar? 36 away. Trying to cut that one. There is again a fumble from wicketkeeper. Not a clean stop. Bye is given, and Raza is left with no other choice. He has to take the strike. He has to find a big boundary. Going to be in search of a big 6 here or a 4. He will try to go big this over. Single, wide, double, makes it 4. Then a leg by 5. 6 of 5 balls. Good over this again. Another tight over from Faizan. And he's got 1 over to come after this one. He's got 1 over left. It looks like the remaining 3 overs, Faizan has 1 to bowl in the remaining 3 overs. The last ball. That's going to be another dot. Chance of a run out. And he misses. He misses. And that will keep Raza on strike. 34 needed from 18. And Khalid but can't believe today. Nothing gone his way in this over. They need 34 from 18 balls. Global Dadoo Titans, they're in a must-win situation here. And on the other side, United, they have 4 points under their belt in the tournament. They're enjoying that ride, kind of a ride we can say, in Royal Pulwama and here at Red Premier League. They're enjoying. They're going on a good pace. They're on the track. Here, 34 away from 18. Global Dadoo Titans. What do you think? 18 गेंदें बची हैं, 34 चाहिए मैच जीतने के लिए 145 पे। 5-17 समाप्त। 3 ओवर का खेल। उमर मलिक और वसीम रजा पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। ये आखिरी क्षण है काफ़ी महत्वपूर्ण जीडी टाइटंस के लिए। ग्लोबल डडो टाइटंस ने 179 तक पहुंचना है। 145 रन बना लिए हैं, 5 विकेट खोए हैं। 17 समाप्त में 11.33 प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ रन बनाने हैं। और क्या रणनीति आगे रहने वाली है, क्योंकि दबाव ज़रूर होगा वसीम रजा और उमर मलिक पे। 32-35 गेंदों से उमर मलिक ने बनाए हैं, 15-6 गेंदों से वसीम रजा एक अच्छा कैमियो खेल रहे हैं। और नज़रें उन पर ज़रूर होंगी जीडी टाइटंस के कप्तान द्वारा, ये देखते हुए कि यहाँ से ये 34 रन अवश्य बनाने हैं। 18 गेंदों से 3 ओवर में 34 बनाने हैं। शाहरुख डार 3 ओवर 28 रन 1 विकेट। और अब जाकर के उनके छोड़ बदला गया है, उस छोड़ से वो साधारण पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे। 18 गेंदों से 34। कहाँ ये मुकाबला जा पाएगा, किसके जोली में ये जीत होगी, ये देखने वाली बात। क्या यहाँ से यूनाइटेड इंपोर्ट जीत की हैट्रिक लगाने में सफल होगी, ये तीसरी जीत इस टूर्नामेंट में लगातार, या फिर ग्लोबल डडो टाइटंस को पहली जीत अर्जित होगी, ये देखना होगा। 18 गेंदें अभी भी दूर, 34 रन बनाने हैं। शाहरुख डार तैयारी कर रहे हैं गेंदबाजी की। 145 6 विकेट्स पे। 17 समाप्त।
फील्डिंग थोड़ी सेट की जा रही है और ऐसे में यहाँ हर संभव प्रयास वसीम रजा का कि कुछ बड़े स्ट्रोक खेले जाए, एक दो बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता शाहरुख डार के विरुद्ध, क्योंकि आखिरी ओवर शाहरुख डार का उनके कोटे की अगर हम बात करें, और अब तक उन्होंने 28 रन दिए हैं 3 ओवर में, 1 विकेट उनको अभी तक मिला है। 6 विकेट अभी तक गंवाए हैं टीम जीडी टाइटंस ने। 145 6 विकेट पे 17 के बाद 18वें की शुरुआत। पहली गेंद लेकर के तैयार शाहरुख डार और सामने वसीम रजा बाएं हाथ से 15 पे नवाज। 34 चाहिए 18 गेंदों से। पहली गेंद लेकर के शाहरुख डार वसीम रजा के लिए, और पहली गेंद डॉट गेंद यहाँ पर। डॉट गेंद से संतुष्ट रहना पड़ेगा और जितनी डॉट आप खेलेंगे दबाव पड़ेगा। 17 गेंदों से 34 की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट अब 12 तक पहुंच चुका है। ये संघर्ष इस समय गेंद और बल्ले का, ये संघर्ष इस समय गेंदबाज और बल्लेबाज का, और कौन सी टीम यहाँ जीत अर्जित कर पाएगी ये बताना जरा मुश्किल है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, एक संघर्षपूर्ण आकर्षक रोमांचक स्थिति वाला ये क्रिकेट मुकाबला, 11वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन का। और ऐसे में शाहरुख डार गेंदबाजी कर रहे हैं यूनाइटेड इंपोर्ट्स की ओर से। 34 चाहिए 17 गेंदों से। अगली गेंद लेकर के वसीम रजा, पहली डॉट और एक बार फिर ये दूसरी, क्या लगातार डॉट होगी, रनआउट का अवसर था पर किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं है। लगातार 2 डॉट गेंदें और अब जाकर के 16 गेंदें अभी भी बची हैं और 16 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए 34 रन बनाने हैं। और अभी तक संभवतः 2 अथवा 3 गेंदें ये देखना होगा। 16 गेंदें हुई हैं और 16 गेंदें 34 और जी हाँ रिटायर्ड आउट होकर के वो वहाँ पर आउट करार दिए गए थे। और ऐसे में 16 गेंदों से 34 की आवश्यकता है। 145 पे 6। यहाँ कनेक्शन हुआ पर गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं। नो बैन्स लैंड में 1 रन पूरा किया, पलटकर दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज, और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 रन और खाते में। 145 से बढ़कर 147 पे 6। 17.3 15 गेंदे 32 रनों की आवश्यकता। Asking rate is climbing. They require that at 12.80 and over. 32 needed from 15 balls. An uphill task. Need some of the cracking hits. Need 1 or 2 big shots badly here. Can Shahrukh concede? Is he going to stop the batter from hitting the ball? Trying to bang in shot. It's going to roll past to the stumps. They're going to look for one here. That's all he's going to get. With that single, they need 31 of 14 balls. And Raza, unable to understand what to do. 2 dots. Then there is a couple and a single. It's up to Nagavar Rashid to face that 2 balls to go in this over. .31 needed from 14. Gawar Rashid going to be on strike. 148 for 6. 148 for 6. 31 needed. Here is Shahrukh again once more in this over. 148. That one over 5 leg. Where is this one going? Look at that one. It's out of here. Into the stands. Into that corner. Gone for 6. Much needed one. And this is gonna bring things back into the balance. This is gonna balance things. It's a kind of a leveler here. Take a look again. Wow. For a while we lost it in the sky. And then it comes downwards. There it is. In that corner. 25 to get from 13. 1-6. And that's the beauty of T20 cricket. This is going to happen. One big shot. It's going to tilt other way. It's going to tilt from one end to the other end. That's why it has been well said. And in 2020 shorter format, the fortunes of teams can swing wildly to and fro, back and forth. That's what we have seen over here, what's going on at the moment. 25 from 13. What a strike from Gawar Rashid. That shot that flown all the way. Shahrukh Dar, 37 of 3.5. Once again, he's gone for runs. He picked up wicket. The last one, that's aerial and upish. Will he be caught? Will he get to the ball? Are they going to look for the 2? They're going to look for the second one. Good running between the wickets. They need 23 from 12. Zishan Ali unable to respond with a good return there. 23 needed from 12 balls.
They're very much in the game. It's a chase on, 23 from 12. What do you make of it? I think it's chase on. So don't go anywhere, don't fade away, don't walk away. Stay glued to your laptop screens and the mobile phones, because this one, who knows, maybe something special. And who knows how things will unfold in coming 2 overs. It will be something you're going to remember till ages to come. It's going to take you to the heights. It's going to take you to the roller coaster of a ride. Join us and enjoy the game in remaining 2 overs. 12 गेंदें बची हैं, 23 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। शाहरुख डार ने 4 में 39 खर्चे, काफ़ी खर्चीले साबित हुए शाहरुख डार। और अब जाकर के गौहर रशीद जो कि 8 में 2 मात्र गेंदें उन्होंने खेली है और 8 रन बनाए हैं अभी तक। वसीम रजा 18 पे 10 गेंदों से। और देखना होगा यहाँ से क्या ये 23 रन यहाँ से बटोर पाएगी टीम जीत अर्जित करने के लिए। ग्लोबल डडू सचिन कुमार अथवा फैजान का इस्तेमाल किया जा रहा है। फैजान का आखिरी ओवर 3 ओवर 25 रन, 12 गेंदों से 23। वसीम रजा सामने, और पहली गेंद पर सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और खाते में 11 गेंदों से 22 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। 157 पे 6, 18.1 ओवर की गेंदबाजी। गौहर रशीद और वसीम रजा, ये 2 बल्लेबाज बीच मैदान में हर संभव प्रयास में। और किस प्रकार से अब यहाँ से आगे इस मैच को ले जा पाएंगे। एक संघर्षपूर्ण, एक कांटे की टक्कर का मुकाबला इस समय चल रहा है। 11 गेंदें 22 रनों की आवश्यकता। 18.1 फैजान, सामने है गौहर रशीद दाएं हाथ के बल्लेबाज, और उनके साथ वसीम रजा जो कि 19 पे है 11 गेंदों से। 157 पे 6, 179 जीत के लिए लक्ष्य मिला है ग्लोबल डडू टाइटंस की टीम को इस 11वें मुकाबले में जेके सुपर सीमर ट्रेड प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2। 22 चाहिए 11 गेंदों से। फैजान चले गौहर रशीद के लिए, 22 की आवश्यकता। एक बार फिर हवा में गेंद, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर गौहर के बल्ले से 6 रनों का निर्णय। एक और छक्का बेलता हुआ, और अब जाकर के मात्र 16 रन चाहिए। फैजान के विरुद्ध ये बड़ा स्ट्रोक गौहर रशीद के बल्ले से। देखना होगा, हालांकि सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर जा लगी है गेंद, चेक किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और ये 6 रन अर्जित करते हुए बल्लेबाज। 6 और खाते में ग्लोबल डडू टाइटंस की टीम 163 तक पहुंच चुकी है। 6 विकेट पे 18.2, 10 गेंदों से 16 की आवश्यकता। 60 needed. He has made that light work of that with that 6. 16 away from 10 balls. 163 for 6. Gauhar Rashid on to 14 of just 3 balls. What a cameo he's playing here. There's still 16 away. Faizan in his 4th over. And that one, he's going to pinch a single. Could be tight. There is a direct hit. Are they going to upstairs? And it is sent to the TV umpire. TV umpire to direct. Look into this one. Raza looks okay. Raza looks fine. He says, I'm home. And let's find it out. There is going to be excitement in the game. It's going to be intriguing here. Is he in trouble here? Look at that one again. Let's go through this one again. Is he home? Is he okay? Is he fine? Let's find it out. This is going to change the equation then if he is short off his ground. Take a look. Take a look. Oh, he's okay there. He's fine there. No problem at all. And Raza survives scare. And he throat out earlier on. He told Khalid but that I'm fine. Not out is displayed on the big screen there. 15 needed from 9 balls. 15 away. 9 balls. Faizan gone for 33 off his 3.3. Interesting figures. 3-3. And it's 3.3. He's in his 4th over. On strike is going to Wasim Raza. On to 19 of 11. And is he going to launch big? And that one. Where is this one going? That's gone into the gap. That's 4. Oh, come on, boy. And is it a boundary or a 6? We'll have to. Oh, that's given as a 6. It carried all the way for a maximum. And look at that shot. I thought it bounced within the boundary line. But that carried all the way. And look at that. It's gone flat. He took pace off the ball. It was a slower one. But Raza is there to pick it. And he nailed it to perfection. Yeah, it is. Indeed, it's a 6. It landed beyond the boundary cushion. Noishon and Global Dadoos are on their toes. Look at Samir Bell. He's having some fun in the dugout there. They need 9 in double figure, in single digits now. 8 balls, 9 needed. He's got 2 balls left in this over. 9 to get. As we watch Faizan again. Razan strike. And look at that one.
He was trying to use that lap. Isn't happy. He's given out. Caught behind. And Faizan strikes. Oh, look. There is going to be tensed moment. And tense teammates as he's gone here. Can't finish the game in style. He's going to go back to the pavilion. He's walking back. There is more suspense in the game. As Raza is gone, he's caught behind. Take a look again. He finished it into the hands of wicketkeeper in the end. Easy goal, easy take for Khalid, but behind the stumps. That's a big fish. That's a huge wicket. And Raza is gone. This game isn't over yet. Salimir is going to be the next one to walk in. 9 away from 7 balls. Eight away. Kabarishi decided against that second run. There was second run pretty on. But why he decided to go with and contend with one? Why he decided against that second run? Just 8 away from 6 balls. 15 from 4. Gabar and Salimir. He just walked in and is on to 1. Sachin Kumar will bowl that final over. He's going to go with a spin, captain here. Captain has opted for a spin. It's going to be Sachin Kumar to finish his quota here. And they need 2 big shots to finish the game. They need 1 shot and other singles to keep their hopes alive in today's game. What will happen? Who will walk away? Tense moments there in the dugout. You can see that. Look, Imtiaz Lepti is concerned at the moment. You can see that. There is a kind of that grim on their face at the moment. Little sadness is there. But there is little hope also. It's a mix-up. Hoping against hope, but concern too. Tensed moment. Nervy chase underway. 8 away, 6 balls. Gabar Rashid walks up to Salimir. Who's going to hold the no? Salim on strike. Pressure on both ends. And which will rise to the occasion? Let's see. Batter or a bowler? Wicketkeeper up to the stump. First ball of fresh over. And he's trying to slog it. It's a dot ball. 8 away. 5 balls. 8 needed. To the ball. Can't make it to the ball. It goes past. 7 needed from 3 balls. Here is Sachin Kumar again. And Gabar Rashid is going to try a big shot here. They're not going to run. They're not going to run. 7 needed from 2 balls. What's going on? What a chase. Who would have thought that this will go down like this? It's gone down to the wire. 7 needed from 2 balls. 6 to level the scores. Gabar Rashid is going to try a big shot here. Can't get that. 1 ball. 7 needed. 7 needed.
Navy chase. What a moment in the game. And Global to the Titans. Can't believe this. It's gone from bad to worse. One ball. 7 away. 7 away. And that one. Where is this one going? Is it going to the first super over of the tournament? It is. That's gone on to the rooftop. You beauty, Gawar Rashid. Look at his celebration. Look at his celebration. He's pumped up. He's delighted. And they invaded the field for a while. They walk it out to the center. And look at that. He punches the air in delight. Gawar Rashid is going to the first super over of Red Premier League Season 2. Nervy moments in the middle. Nervy chase. Gone down to the wire. Nail biter of a contest. And the first super over is on the line. And look at Gawar Rashid. He is kicking himself. He must be. And why not? He must be kicking. As they were in the game, it was their game to win. And now it's down to the super over to decide the fate. Which side will walk away with invaluable 2 points. And look at that shot. He fetched it from wide up the up. And look at the celebration. Look at the celebration. Wow. Telling Sachin Kumar, I'm the best. I'm the best. And you're the best indeed. You proved your worth. And so that's it we have for you from this. Join us for the super over in a while. And that's going to be exciting super over coming up. And that will attract the viewers once again, because that's going to be so special. It was a magical hit that kept their hopes alive. Take a look again. Oh, wow, amazing. And keeping their hopes alive. That's gone aerial onto the rooftop. The first of its kind super over of Red Premier League Season 2. What's going on? We shall be back with the super over. Till then, assalamu alaikum and fi amanillah.
Welcome back to the Super Over here. What a game. It was intense clash, full of tense moments. It was a nervy in the end. There was a little grim on either side. And what a game of cricket, what we witnessed. 20 overs per side. And we are yet to decide who is the winner, who will walk away. Faizan to bowl the Super Over for United Imports. And they're going to carry on and continue with Sam Rashid. He walks in at number 1 in the Super Over. He's there, and the victory sign from Mam. Back to the game again. On strike is going to be Rashid, the man who kept their hopes alive with that lusty blow of the final ball. On strike is going to be Rashid. And his partner walks up to him, would have a word, and he's telling him, I think, be quick. If there is a dot, we have to fetch a single. We have to fetch a single. We have to put pressure on the fielding unit here. First ball of the Super Over. The first of its kind of RPL 2. First ball of the Super Over. Faizan as he comes on to bowl. The first ball of Super Over. And that's a big shot onto the offside. He's taken. Sachin Kumar, the man. He takes that catch and telling Rashid to walk away. What a take, what a goal. The first ball of the Super Over, and he's taken. Oh, there is going to be intense clash. Well, he's losing cool, and Hurad Sophie is doing good. He's telling Rashid to walk away. Sachin Kumar, the man, is telling him walk away, walk away. Nicely caught. What a catch. And they have only one option now. They have to face 5 balls because they're 1 down. If they lose the second one, they are going to be nil at the bottom. I mean, they will finish on 0, and then other side need just 1 to win because only 2 can bat. And look at that go ball, just inches inside the boundary line. What a balance and what a go ball. Unbelievable. Blinder of a catch. And he deserved that appreciation for that kind of a catch. Unbelievable. And Rashid, he need to go back. And he's walking back to pavilion, and this isn't good at all from his side. Oh, now that is going to be the Anaka. It's a no ball. He has given it a no ball. The strike umpire there. It's a no ball. Drama, utter drama in the middle. Can you believe, Nazir? They check at the front foot. Drama in the middle. What's going on? Oh, full of comedies. Believe me. What's going on? Drama in the middle. Utter drama. They sent it upstairs. It's a no ball. He overstepped it. It's a big no ball. Something needs to be behind the crease. Can you believe? Can you believe? So don't celebrate early. Believe me, don't celebrate early. It's going to be a freight coming up. Oh, they are looking concerned at the moment. But the strike umpire has a right. He can ask the TV umpire to assist me. Whether he has overstepped or not, it's a no ball. There is going to be drama. Comedy of errors, I can see. Comedy of errors in the middle. Utter drama in the middle. Can you believe? First ball of the Super Over. It's a no ball. It's a no ball. Freight coming up. An assault to an injury. This is gonna hurt their side to great extent. Now the no ball means Freight is coming up. And they have all the 6 balls in the kitty. What's going on? Drama. Drama in the middle. I can't believe. Intriguing like that of Detective Now. Something needs to be behind the crease. But it is a no ball. It is a genuine no ball. It is a no ball. So what they are asking about, it's a no ball. Well, let's see. Nazir, your comments. They're still asking the TV umpire to look into this one clearly, but it is a no ball. It's clearly a no ball. Well, Nazir, what are going to be your comments? How you want to come in and talk about it? It's a good game of cricket. But you know that it can turn the tide. One no ball can change the complexion of the game. It can reshape the game of cricket on a single ball. चलिए सुपर ओवर में आपका स्वागत है और कई घटनाएं घटी हैं. पहले 178 बने, 7 विकेट, फिर दूसरी पारी में 178 बने. वहां गौर रशीद का कैच लपका सचिन ने बहुत ही बेहतर तरीके से और वो स्कोर्स लेवल हुए. फिर सुपर ओवर में पहली गेंद पर कैच लपका जरूर था सचिन ने गौर रशीद का. वो पारी का प्रारंभ करने आए थे पर उसके बाद उसको नो बॉल करार दिया गया और यहां अभी भी सुरक्षित है बीच मैदान में. तो कहीं ना कहीं एक संघर्ष था, एक अलग प्रकार की रोमांचकता इस मैच में, इस सुपर ओवर में, जहां
ग्लोबल डडू टाइटंस की टीम को सुपर ओवर में बल्लेबाजी का अवसर मिला है और अभी भी थोड़ा सा विलंब इस खेल में और देखना होगा यहाँ अब जाकर के दोबारा से फैजान ने शुरुआत की है गेंदबाजी में। एक बेहतरीन शानदार आकर्षक ये रोमांचक सुपर ओवर प्रारंभ हो चुका है। गवर रशीद और उनके साथ संभवतः सरशील अब्बास आए हैं प्रारंभ में, ये देखना होगा। और अगली गेंद लेकर के 6 गेंदें अभी भी सुरक्षित है। फ्री हिट का इशारा होगा यहाँ पर, जी हाँ, और लाभ लेना होगा। 2 बल्लेबाजों का आपस में एक बेहतर और शानदार सहयोग देना होगा और सुपर ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का प्रयास जीडी टाइटंस का। यूनाइटेड इंपोर्ट्स के सामने क्या लक्ष्य रहने वाला है ये सुपर ओवर और पहला सुपर ओवर जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग का। अगली गेंद लेकर के फैजान चले, राइट आर्म ये गेंद, और इस बार अंदरूनी भाग लगा, पीछे गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ। It's 5 on ball here. First ball it was a no ball because he overstepped it. They have 5 on the board. Global Dadoo Titans inside edge. And it all, look at eluding stumps. It was a free hit, so there was no problem at all. It rolled it past. Wicketkeeper unable to stop it. Gonna be 5 on the board straight away for Global Dadoo Titans. It's 5 on the board. Just 1 ball down in the super over. And the second ball is coming up. Well, it's 5 on the board of the ball. Second ball is coming up. Goes and bows to Gawar Rashid. He comes forward onto the front foot. He's going to pinch a single here. That means 6 on the board of 2 balls. 4 important balls are going to come. Remaining 4 balls in the very first over. There are 6 on the board at the moment. 6 after 2 balls in that super over. Exciting game of cricket. Look at this game of cricket. Who would have thought that? Absolute nail biter, 20 overs. Now we're into the super over. Drama continues in the middle. Here is Fazan again. And that one guided. Wanted a single. Could be tight. Needed a direct hit. And he misses the target again. It's been the story with Khalid there today. He's missing the target again and again. And that means Gawar is back on strike with 3 balls to go in the super over. 7 रन बने हैं, 3 गेंदें और 3 गेंदों का अभी भी आना बाकी है। ग्लोबल डडू टाइटन सुपर ओवर में अब तक 7 रन बना चुके हैं, 3 गेंदों का आना बाकी। फैजान गेंदबाजी कर रहे हैं, अथर्व काले और गौहर रशीद का इस्तेमाल किया गया है सुपर ओवर में। फैजान सामने वाले छोर से और ऐसे में अगली गेंद लेकर के और इस बार खूबसूरती के साथ और गेंद एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए 11 रन संख्या, 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदों का आना बाकी है सुपर ओवर में। Gawar Rashid hits that one. It was asking to be hit. And he picks that one up nicely. Look, shuffle across. Oh, that's a nice connection again. A great shot. Now the man drops down to the fine leg boundary. There's going to be the man at it's backward of square boundary. But that boundary takes them to 11. 2 balls to go in the super over. On strike, Gawar Rashid. On to 9 of 3 balls. Comedy of errors. Utter drama in the middle. That's going to be the second lost ball of an over. This time comes down the track. He's going to look for double here. Is he going to try? Is he going to try? Could be tight. Chance of a run out. Chance of a run out. Is he going to send it upstairs? Yes, he does. He's going to ask the TV umpire to help. I think it's going to be a tight one. Atharva Kale is on the danger zone. He's running down to the danger zone. He's on that portion where we call he's going to be in caution. The man in caution. That was the second run. They were trying to pinch that second one. Is he short of his crease? Only the time will tell us. They have at least, if he's run out, they still have 12 on the board. And if he's saved, then they have both the runs. That means they are 13 on the board. I think he's okay. He's fine there. Looks like. And it's not out. They are 13 on the board. The last ball is going to come up the super over. The last ball. Where is this one going? That is a change of pace. Nicely done this time. Oh, he hits the target. 14 to get from 6 balls. He's at 14 for United Imports. So don't go anywhere. We'll be back shortly for the chase here. They need 14 to win. What do you think, Nazir? 13 scored up the 5 balls. The last ball we saw the run out there. Gawar Rashid unable to pick that one again. He mixed it up nicely. They need 14 from 6 balls. अच्छा संघर्ष रहा सुपर ओवर में, 13 बने, 14 जीत के लिए इस सुपर ओवर में यूनाइटेड इंपोर्ट्स को। पर बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, कुछ भी परिणाम हो पर संघर्ष था, रोमांचकता इस मुकाबले में देखने को मिली। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिला और श्रोताओं को एक मनोरंजन की स्थिति आज के दिन देखने को मिली इस सुपर ओवर के चलते। फिलहाल 14 रन चाहिए यूनाइटेड इंपोर्ट्स को इस सुपर ओवर को अपने नाम करने के लिए और मैच अपने नाम करने के लिए। This is called the nail biter. This is called the nail biter. Gone down to the wire.
Unbelievable scenes here at the center. Now it's time for United Imports, who are going to be the batters, who are going to be 3 men to operate for their side. They need 14 from 6 balls. The umpire is telling them, you have to be ready, as it's your turn, and we have one more match coming up. That's lined up. That's the third one for today. It was a try-on for today. We have the third game coming up. Now they're going to walk up the field. 14 to get. And Sachin Kumar, and he has been the man who kept their hopes alive in that final over, the way he bowled in that over. And it was Gawar Rashid from the batting side who was the hero with the bat to level the scores, who draw the leveler, taking it into the super over. Now the super over is here to decide the fate of the game. And after the completion of this over, we shall come to know who is going to walk away with 2 invaluable points. We are super over. And look at this side. We're going to be 3 men. Later on we shall come to know. Short pause and they will be back onto the field again. 14 to get from an over. 14 रन चाहिए अब सुपर ओवर को जीतने के लिए यूनाइटेड इंपोर्ट्स को. 13 रन बनाए यहाँ ग्लोबल डाडू टाइटंस ने, पर खूबसूरत कहानी रही जो आज दूसरे मुकाबले से प्रारंभ हुई थी. यूनाइटेड इंपोर्ट्स की उस बल्लेबाजी से 178 बनाए थे, तो दूसरी पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी 178 वहां पर भी बने. फिर सुपर ओवर शुरुआत, वो पहली ही गेंद पर विकेट पर नो बॉल का इशारा. तो ये बहुत ही बेहतर सफर रहा अब तक का. फिलहाल 13 रन बने हैं सुपर ओवर को जीतने के लिए. और किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ देखना होगा क्या खालिद भट्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, जीशान अली के साथ अन्य साहिल शफी का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर किसी अन्य बल्लेबाज का. लौट आएंगे कुछ ही क्षणों के बाद. 13 रन 1 विकेट पे ये सुपर ओवर में रन संख्या है. 14 रन तो बात कर रहे थे कि किस बल्लेबाज का इस्तेमाल. मैं समझता हूँ जीशान अली एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और उनके साथ आप किस बल्लेबाज का इस्तेमाल कर सकते हैं. You're absolutely right. I totally agree with your statement. You're talking about Zishan Ali. He has found his rhythm today, and they're going to go with Khalid, Zishan, and I think Sahil or Afan. And there is another option, Afan or Zishan, and 2 are going to be Khalid, and he's got, I think they will try with the Sachin also. Sachin has that ability, and Sachin, it has been the day of Sachin. And the way Sachin played in today's game, that was so nice and amazing. The way he shown that gutsy approach from ball 1 till the very last end, it has been so nice. And let's see, we're in for that chase of United Imports. They require 14 to prevail and take away 2 more points to make it 6 out of 3, and that will mean they will remain on top of the points table. They will climb the top spot on the points table. And we're waiting for the 2 openers to make their way out to the center. And look at the global Dadoo Titans. They're out in the middle. But it's their game to lose. Forget about this 40 needed. But at one stage, talking about the 2020 over game, where we saw the final over, they needed 8. But that's why this game is called the game of glorious uncertainties. And people often talk about it. Why you use these lines? Because this is the principle of cricket. And this is the postulate, the formula, the idea. And it has proved itself right millions of times. And once again today, it proved itself right. And that's why it's called the game of glorious uncertainties. 14 needed of the final over now. And over 6 balls. Who will prevail? We shall have the final winner after these 6 balls. We shall have the winner after 6 balls. We shall meet the one who will take away 2 invaluable points. Who are going to be? Which team will take away? Which side will walk away with 2 invaluable points? Let's find it out. United Imports. Or is it going to be Global Dadoo Titans? Can they defend 14 from an over on the other side? Can United Imports take their side over the line? Who's going to prevail? We're still waiting for the openers to make their way out to the center. It's a super over, and first of its kind in RPL 2 here at Bakshi Stadium. People are eagerly waiting for United Imports to make their way out to the center. So is Global Dadoo Titans at the moment. Conversation is going on. Who's going to bowl that over? Are they going to go with Gawar Rashid or someone else? Your comments? जहाँ तक मेरा मानना है, स्पिन जो है वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको
आपके पास वसीम रजा ऑप्शन है या उसके अलावा एक और गेंदबाज आपके पास है? आपके पास सचिन जिन्होंने आखिरी ओवर बहुत बढ़िया डाला था, पर यहाँ एक अतिरिक्त रिस्क उठाना नहीं चाहिए ग्लोबल डडो की टीम। तेज गेंदबाज से निश्चित तौर पे वह जाना चाहेंगे, पर 14 रन बना रहे हैं और बल्लेबाजी में अब प्रतीक्षा की जा रही है। बस कुछ ही क्षणों की देरी, हालांकि पूरी टीम इस समय ग्लोबल डडो टाइटंस के बीच मैदान में पहुंच चुकी है क्षेत्र रक्षण के लिए। 14 रन इस सुपर ओवर में बनाने हैं मैच जीतने के लिए यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर की टीम को। और ऐसे में अब फील्डिंग जो है क्षेत्र रक्षण सजाया जा रहा है। इम्तियाज लेफ्टी, उसके अलावा गौहर रशीद, आमिर अजीज, उनके साथ सरशील अब्बास और दर्दिश गोनी और कुछ अन्य दीगर खिलाड़ी, और पूरी तरह से टीम अब बीच मैदान में प्रवेश कर चुकी है जहां तक ग्लोबल डडो टाइटंस की टीम का सवाल है। और यूनाइटेड इंपोर्ट्स के 2 प्रारंभिक बल्लेबाजों की प्रतीक्षा की जा रही है। 14 रन सुपर ओवर में बनाने, बड़ा संघर्ष मुकाबला रहने वाला है। किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा? मात्र 1 ओवर की गेंदबाजी सुपर ओवर में करनी है, और ऐसे में कौन से गेंदबाज का चयन? क्या गौहर रशीद पे जाएंगे? मुझे लगता है गौहर रशीद शायद एक ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ग्लोबल डडो टाइटंस के लिए। और वहीं पे बल्लेबाजी में जीशान अली का इस्तेमाल किया जाएगा अथवा किसी अन्य गेंदबाज का, ये देखना होगा। और यहाँ अब धीरे धीरे से डगआउट से नमूदार होती हुई जोड़ी, और संभवतः खालिद भट्ट का इस्तेमाल किया गया है। खालिद के साथ सचिन, वो हमारा अनुमान जीशान अली को अभी बैंक में रखा हुआ है, पर यहाँ खालिद भट्ट और सचिन का इस्तेमाल ये स्पष्ट हो चुका है बल्लेबाजी में इस सुपर ओवर को जीतने के लिए। खालिद भट्ट और उनके साथ सचिन की जोड़ी बीच मैदान में यूनाइटेड इंपोर्ट्स की ओर से। और गेंदबाजी में ऑप्शन क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी। Let's find it out. Another suspense in the middle. Tensed moment. What a game of cricket. How it turned the tide. It turned it on its head, turning the tables. Who would have thought that it will go down to the wire and we'll have a super over of the season? And that too, first of its kind in JK Super Seaman Rad Premier League, presented by Athwas. As we watch the super over, who will bowl? Gabbar Rashid? Yeah, he's got the ball in his hand. 14 to defend. The 2 men for United Imports. Up front, it's Khalid Butt and he's got Sachin Kumar. Who will prevail? Who will rise to the occasion? Write in. Drop your comments. 14 away. It's going to be Gabbar Rashid. Wasim Raza is trying to ease up his nerves. It's pressure on both ends. Nervousness on both ends. The side which will hold the nerve will go on to climb 2 invaluable points. Let's see which side will carry on with the steeled nerves, with the nerves of steel, nerves of iron. 40 needed in the super over. Gabbar Rashid has got the ball. Khalid Butt on strike. And the call from Khalid is going to be, if there is going to be a dot ball, we have to fetch a bye. Are they going to do that? Sachin Kumar is the other batter alongside Khalid Butt. Gabbar is getting ready. Gabbar keeping their hopes alive in today's match. Is he going to be the hero of the match? Boundary riders all set for the chase in super over. 14 to get. Gabbar Rashid is going to steam in. He's getting ready from Southern Pavilion end. First ball of super over. He leaves the station, goes and bows. The first ball aerially goes. Is in play, is in danger. That's out of here. 6 more. What a start turnover. 8 needed from 5 balls. पहली गेंद पर छक्का, कमाल का स्ट्रोक खालिद भट्ट का। 14 बनाने हैं सुपर ओवर में इस मैच को जीतने के लिए यूनाइटेड इंपोर्ट्स को। और यहाँ पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खालिद भट्ट का, कमाल का ये स्ट्रोक सीधे स्टैंड्स में। और पहली गेंद पर छक्का, 8 चाहिए 5 गेंदों से। What a pickup shot. What a shot. Look at that clinical procedure from Khalid Butt. The second ball, pressure on Gabbar Rashid here. Oh, that one flies again. That's gone again. Over long gone. Can you believe? Would you believe it? That's gone again. The distance. 6 number 2. Just 2 away. 2 खेतों से 2 छक्के, ये कहानी का विलंब है। और यहाँ खालिद भट्ट के बल्ले का प्रहार जो इस समय बीच मैदान में देख रहे हैं। 2 गेंदों से 2 छक्के, 14 रन चाहिए थे सुपर ओवर को जीतने के लिए, और 2 गेंदों में 12 रन बना डाले खालिद भट्ट ने गौहर रशीद के विरुद्ध। ये क्रिकेट की खूबसूरती, ये क्रिकेट की महानता, ये जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग का पहला सुपर ओवर। और निश्चित तौर पर खालिद भट्ट ने इस समय पूरी तरह से यहाँ संघर्ष ला खड़ा कर दिया इस मैच के सुपर ओवर में। 1 to level, 2 to win, 1 to level, 2 to win. Pressure on Gabbar Rashid. He's clueless at the moment and reckless, flawless.
Flawless Khalid Butt, Mr. 360 of the Valley. 2 sixes on the trot. Over mid wicket and over mid on. This is going to bowl number 3. Is it the last ball? No, he's going to reload. He's going to reload again. He's going to go back to the top of his bowling mark. Dead ball signalled. Suspense in the middle. Which will prevail? Surely going to be United Imports game now. They are on verge. They are on verge of climbing 2 more points here. The third ball. Is it into the final ball of the match, of the super over? That's a good shot again. Over covers and into the fence. That's it. United Imports prevail. And they won this one with 3 balls to spare in the super over. And look at the joy. Look at the jubilation. And Zishan Ali hugs Khalid Butt, the captain of the side. And look at the scenes. These are the lively pictures coming your way from Bakshi Stadium. It's the master stroke from masterclass with a masterpiece hitting. Credit to you, the hero of the game in the end. It is the man behind the sticks, Khalid Butt, with 2 sixes and a boundary to prevail. They won this game with 3 bowlers to spare in the super over. That's it. We are for you from super over. But this was absolutely gorgeous contest between 2 teams, and it is the United Imports who won it in the super over. Match was tied, but the super over gone their way. And look at that finish. Look at that finish. I call it one of the best. It was miraculous one as Khalid Butt takes his side over the line with 3 bowlers to spare, and it's going to be heartfelt, and you're going to feel for the fielding unit as of now. But that's a remarkable victory, and they rise to the occasion again. The local star proved his mettle again. United Imports prevail with 3 bowlers to spare in the super over. It's a majestic victory. It's a massive win in the end with 3 bowlers to spare in the super over. Congratulations to United Imports. Commensurations to Global Dadoo Titans from our side. We shall be back with the match number 3. Till then, Assalamu alaikum and fi amanillah.